Yes, sir. Okay. Okay. Now, I think recording has started. Thank you, Anand ji. Now, so we are now going to start with these number of chapters. I believe you can see this PDF file. Is it visible, everyone? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so we are going to start a revision part from the chapter number one. So, as the name itself suggests, the paper name is Managing Interpersonal and Group Process. So this chapter number one is an introductory chapter जिसमें हम बात करेंगे introduction to group process. Introduction to group process. Okay. Now, first of all, the definition. What is called group? A group is two or more individuals who are connected by and within social relationship. As we know, already हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप में कम से कम दो मेंबर्स का होना जरूरी है और ये जो दो मेंबर्स हैं एटलीस्ट देयर शुड बी टू मेंबर्स इन अ ग्रुप एंड दे आर कनेक्टेड within a social relationship. Because of the social relationship, it can be the social relationship as well as it can be a task relationship. It means if the task if your organization has given you some task, तो उस केस में अगर आपकी एक टीम बनाई गई है, ग्रुप बनाया गया है टू कंप्लीट अ टास्क, then we will say that the group is formed on the basis of task relationship. तो ग्रुप सोशल रिलेशनशिप पर भी फॉर्म हो सकता है और टास्क रिलेशनशिप पर भी फॉर्म हो सकता है. As we know, group connect people to one another. Obviously, ग्रुप में क्या होता है कि लोग जो हैं यानी जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. So here we have taken one example of the family group. Family group is something that which is called a primary group. Family group is also known as primary group. इसको हम already देख चुके हैं. क्योंकि the reason is why it is called the primary group because the members they are connected, right? They have interpersonal relationship. राइट. फैमिली ग्रुप ऐसा है जिसमें लोगों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है. ठीक है. दे मे नॉट हैव दे नॉट ओनली हैव जेनेटिक सिमिलैरिटीज बट आल्सो हैव सोशल एंड इमोशनल बॉन्ड्स. यस, फैमिली मेंबर्स में सोशल एंड इमोशनल बॉन्ड्स होता है दैट आर पर्सनली मीनिंगफुल टू ईच मेंबर. राइट. तो इसमें बताया गया है कि जो फैमिली है दैट इज अ टाइप ऑफ द प्राइमरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप्स आर दोज ग्रुप व्हिच आर वेरी क्लोज ग्रुप. इसमें लोग जो होंगे जो मेंबर होंगे एक दूसरे से काफी कनेक्टेड होते हैं. नाउ कम टू द ग्रुप साइज. अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप साइज. ये तो हमने देखा कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप में फैमिली कैसा एक ग्रुप होगा. नाउ कम टू द ग्रुप साइज. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप. So first of all, the very smaller or the smallest type of group is called dyads. Dyad is something which is a group of two members. ठीक है. दो मेंबर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, डायट कहलाता है. इट इज द ओनली ग्रुप दैट डिसॉल्व व्हेन वन मेंबर लीव्स एंड द ओनली ग्रुप दैट कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन इनटू सब ग्रुप्स. देखो, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप क्योंकि दो ही मेंबर्स होंगे, आप और आपका फ्रेंड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप. इसको क्या कहा जाएगा, वी विल कॉल इट डायट कहा जाएगा. और जो ग्रुप है बेसिकली इस तरह के ग्रुप्स क्या होते हैं, इसमें सोशल पर्सनल रिलेशनशिप इज द हाईएस्ट. ऑब्वियसली जितने ज्यादा छोटे ग्रुप्स होंगे उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप bonds they will be the highest, but at the same time these groups they may not longer for a long they may not last for a longer period of time. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक मेंबर छोड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. और दो लोगों की ग्रुप्स में सब ग्रुपिंग नहीं हो सकती. तीन, in case of the three members sub grouping can happen. In case of four members sub grouping can happen. In case of 10 members sub grouping can happen. Sub grouping का मतलब है ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाना. So they are called the dyads. Dyads means two member group. Now come to the larger group.
Larger groups also have unique qualities. क्या qualities हैं larger groups की? Now look at this. The member are rarely connected directly to all the members. अगर मैं आपसे बात करूं, for example, if I talk about a group of 40 लोगों का ग्रुप है, तो बिल्कुल पॉसिबल होगा कि द मेंबर्स दे मे नॉट, ऑल मेंबर, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ऑल मेंबर दे मे नॉट नो ईच अदर पर्सनली, राइट? हो सकता है कि कभी बात भी ना की हो, बट दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम ऐसे ग्रुप्स में, इवन इन केस ऑफ द लार्जर ग्रुप्स में चांसेस क्या रहते हैं? लार्जर ग्रुप में चांसेस आर ऑलवेज दैट देयर विल बी सब ग्रुप्स, ठीक है? लार्जर ग्रुप्स में सब ग्रुप्स बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो सब ग्रुप्स आर लाइकली टू फॉर्म एंड one or more leaders may be needed to organize and guide the group. बिल्कुल पॉसिबल है, जितने ज्यादा बड़े ग्रुप्स होंगे उसमें एक से ज्यादा लीडर्स की जरूरत होगी, क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जांपल देयर आर 40 मेंबर ग्रुप्स में मेल्स हैं, 25 मेल्स एंड 15 फीमेल्स। हो सकता है इन ऑर्डर टू मैनेज और इन ऑर्डर टू मेक इट डिसिप्लिन इन of this group, there is one male is required, as one male leader is required to manage males, and there is one women leader is required to manage all females. I hope ये समझ आया होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप्स में जितना ज्यादा ग्रुप्स बड़े होंगे, सब ग्रुपिंग उतनी ज्यादा होगी। एट द सेम टाइम देयर विल बी अ more and more leaders required in order to manage and organize the group. I hope यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चे, सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes sir, yes Clear. देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज सिंस यू आर employing your 4 hours of time, I am also employing my 4 hours of time, तो we will definitely make sure कि हम जितना भी टाइम इस ग्रुप में, इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, everything, each and everything should be very productive. थोड़ा सा स्पीड आपको ज्यादा लग सकती है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि रिविजन क्लास है। जो सिलेबस हमने 15 क्लासेस में किया है उसको हम एक तरह से आप कह सकते हैं 2 क्लासेस, 2 आवर्स की 2 क्लासेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पूछना है, यू कैन आस्क एनी टाइम एनीथिंग, राइट? तो ये हमने देखा, ग्रुप्स के बारे में देखा, हमने देखा लार्जर ग्रुप्स एंड शॉर्टर ग्रुप्स के बारे में। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ये अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर, एक सवाल ये उठता है कि ग्रुप्स में व्हाट शुड बी द आइडियल नंबर ऑफ मेंबर, यानी जो मेंबर्स हैं उसका आइडियल नंबर क्या है, राइट? क्या ग्रुप्स बहुत छोटा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ आई से 2 मेंबर ग्रुप, या कोई ग्रुप बहुत बड़ा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 16 मेंबर ग्रुप? नॉर्मली इट इज अंडरस्टैंडेबल विद नंबर ऑफ रिसर्च दे हैव कंक्लूडेड कि अगर ग्रुप बहुत छोटा होगा तब भी प्रॉब्लम है, राइट? और ग्रुप बहुत बड़े होंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो द ग्रुप मोर और लेस दे शुड बी और दे टेंड टू बी शॉर्टर, somewhere around 3 to 4 members should be the ideal number of members in a group. ये नंबर ऑफ स्टडीज इंडिकेट करती हैं, इसको हमने डिटेल में अपनी प्रेजेंटेशंस में मेंशन किया हुआ है कि 3 से 4 मेंबर्स दे शुड बी द आइडियल नंबर ऑफ मेंबर्स जो ग्रुप में होने चाहिए। ये हमें समझ आया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब ये देख लेते हैं कि ग्रुप्स के टाइप्स क्या हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आपने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रुप क्या हो सकते हैं? छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं, दे कैन गो द डायट्स, दे कैन बी द मल्टीपल ग्रुप्स व्हिच इन wherein the member are more than 3, and there can be the triads wherein the member are 3. But on the basis of similarity, on the basis of shared idea, there can be the different types of group. जैसे आप देख सकते हैं group differs from one another. हर ग्रुप अपने दूसरे ग्रुप से अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक फैमिली की, राइट? एक फैमिली की, तो फैमिली इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लोग, वी कॉल देम दिल्लीहाइट्स, राइट? तो वी इफ यू कॉल देम दिल्लीहाइट्स, व्हाट डज इट मीन? कि भाई हम दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, दे आर दिल्लीहाइट, राइट? एंड इफ यू सी देम कि हाँ भाई मैं दिल्ली से हूँ, आपका फ्रेंड बोलेगा मैं भी दिल्ली से हूँ। तो एक तरह का ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेंबर्स मे नॉट नो ईच अदर। डेफिनेटली दिल्ली में पॉपुलेशन इज मोर देन 1.5 सीआर, राइट? 1.5 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है दिल्ली में। लेकिन क्या आप सबको जानते हो? आंसर इज नो। बट जो दिल्ली हाइट होने का जो एक फील है वो कहीं ना कहीं सब में शेयर्ड होगा। इसी तरह से इफ समवन कैन से आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम पंजाबी, ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार,
तो ये भी एक तरह का एसोसिएशन है, यहाँ पे लोग एक शेयर फीलिंग एंड या शेयर आइडिया शेयर करते हैं, बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है द मेंबर दे मे नॉट नो ईच अदर। तो इस तरह का भी ग्रुप हो सकता है विच इज अ मच लार्जर ग्रुप। बट ऑब्वियसली यहाँ पर इन केस ऑफ फैमिली ग्रुप, इन केस ऑफ सच ग्रुप लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली हाइट्स, डेफिनेटली इनके वैल्यूज अलग होंगे, शेयर्ड आइडियाज अलग होंगे, बॉन्ड्स अलग होंगे एंड एसोसिएशन भी अलग अलग होंगे। इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो यहाँ पे मेंशन है ग्रुप कम्स इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स, साइज एंड परफॉर्म फंक्शंस that are vast and varied, so the differences among them are as noteworthy as their similarities. Now we will have to look into the similarities and the differences between the different types of groups. So आप देख सकते हैं, we have primary group, we have social groups, we have collectives and categories. ये चार अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं on the basis of the different natures of group और shared idea. First of all, आप देख सकते हैं प्राइमरी ग्रुप। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन द प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? इट इज अ स्मॉल लॉन्ग टर्म ग्रुप सच एज फैमिली एंड फ्रेंडशिप। आप अपनी फैमिली के साथ एसोसिएटेड है, तो फैमिली के लोगों के या फैमिली के मेंबर्स के बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन होगा, देन डेफिनेटली दे विल हैव द फेस टू फेस इंटरेक्शन, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर एंड दे विल हैव द हाई लेवल ऑफ कोहेसिवनेस, दे विल हैव द हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन, राइट? तो बेसिकली फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप, स्मॉल फ्रेंड ग्रुप्स, 3 या 4 मेंबर्स का आपका जो फ्रेंड ग्रुप्स है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स कैन बी लार्जर, फ्रेंड ग्रुप कैन बी लार्जर, बट मैं छोटे ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रेंड ग्रुप्स, समझ आया? ठीक है, तो ये ऐसे ग्रुप्स जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रुप्स हैं, एट द सेम टाइम द ग्रुप कोहेसिवनेस इज द हाईएस्ट, फेस टू फेस इंटरेक्शन इज वेरी फ्रीक्वेंट, solidarity for each and everyone, high level of commitment and interdependency. ऐसे ग्रुप्स को बच्चे we call them primary group. So Charles Cooley, he is the one, he talked about the different types of group. He was the one, he said, he believed such groups serve as a primary source of socialization for member by shaping their attitude, value and social orientation. आप किस तरह के फ्रेंड ग्रुप्स में बैठते हो, राइट? आप किस तरह की फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग है, देन डेफिनेटली वो आपका सोशल ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा। इसको ना बोलते हैं ना कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स की कंपनी कैसी है, दैट largely, mainly and largely decides about your future, about your socialization, your values and your attitude. ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन योर पर्सनालिटी। इसको आप इस तरह से, नाउ these type of groups as primary group because they are typically the first group people join, but also because they fulfill such an important role in people's lives. Definitely, जब आप बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली ग्रुप को ज्वाइन करना इज नॉट डेलिब्रेट, राइट? आप डिसाइड नहीं करते कि आपकी फैमिली कौन होगी, ठीक है? when you born in a family, then definitely you automatically become a member of that group. तो इस तरह का जो ग्रुप होगा which is called the primary group, बच्चे, they are called the first group. इनको फर्स्ट ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो फर्स्ट ग्रुप होगा बचपन से या आपके बर्थ से, वो आपकी फैमिली होगी। इसी तरह से फ्रेंड ग्रुप, दे आर ऑल्सो द इनिशियल टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो आई होप प्राइमरी ग्रुप आपको समझ आया होगा सबको, व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप, क्लियर है? नाउ कम टू सोशल ग्रुप। व्हाट आर कॉल्ड सोशल ग्रुप्स? सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? ओके, सोशल ग्रुप्स, social groups are larger and more formally organized than primary group, and membership tend to be shorter in duration and less emotionally involved. See, जब हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल ग्रुप की, सोशल ग्रुप कैन बी योर कोलीग्स, ठीक है, वर्क स्पेस, वर्क स्पेस मेंबर, they're the colleagues, right? So if you have such relationship with your members, obviously that is not a very primary type of grouping. कॉलिग्स के साथ बैठना, टीचर्स के साथ आइडियाज को शेयर करना, या टीचर्स के साथ एंड स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप, दैट इज नॉट अ प्राइमरी रिलेशनशिप, इज अ प्राइमरी ग्रुप, दैट इज अ सोशल ग्रुप, राइट? तो सोशल ग्रुप ये नॉर्मली लार्जर होंगे, इसमें आपके नेबर्स आ जाएंगे, डेफिनेटली द नेबर दे विल बी द पार्ट ऑफ योर सोशल ग्रुप, आपके वर्क स्पेस के लोग आ जाएंगे, आपके बॉस आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर सोशल ग्रुप दे आर लार्जर कंपेयर टू प्राइमरी ग्रुप, बट डेफिनेटली there is a very less emotions born involved, definitely.
जितना आप अपने इमोशनल अपनी फैमिली के साथ अटैच होंगे, डेफिनेटली इतना आप अपने नेबर या अपने कोलीग्स के साथ उतना नहीं होंगे. द बाउंड्री ऑफ सच ग्रुप आर मोर प्रेम्बल, so member can leave old group behind and join new one. These groups are in general more instrumental ones. They are likely to stress the performance of tasks rather than enjoying relationship. इसका मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स कि जब हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की, तो सोशल ग्रुप्स दे आर वेरी डायनामिक. इसका मतलब है आपके वर्क स्पेस पर आप आज किसी के साथ बैठकर काम कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे और इन द नेक्स्ट मंथ यू विल बी डायरेक्टेड टू वर्क विद समवन एल्स, राइट? इसी तरह से व्हाट यू एंजॉय, सोशल ग्रुप्स में हम एंजॉय क्या करते हैं? सोशल ग्रुप में मेनली व्हाट वी एंजॉय टास्क. वी डोंट शेयर रिलेशनशिप, वी एंजॉय टास्क, कि आपको टास्क करना है मिलकर, ठीक है. नेबर्स के केस में भी डेफिनेटली वी एंजॉय लेसर रिलेशनशिप, लेसर एंड मोर टास्क. समझ आया? तो सोशल ग्रुप्स क्या हो गए? Various terms have been used to describe this category of groups such as secondary group. They are also called secondary group. Primary group के बाद जो आपका the next type of group you face is always the social group. आपकी फैमिली के बाद आसपास के आपके लोग जो होंगे, आपकी सराउंडिंग में जो होंगे, जिनसे आपका इंटरेक्शन है बट इमोशनल इंटरेक्शन नहीं है, दे विल बी ऑलवेज अ सेकेंडरी ग्रुप. उनको बच्चे सेकेंडरी ग्रुप कहा जाएगा, ठीक है. तो आई होप प्राइमरी ग्रुप क्लियर है, सेकेंडरी ग्रुप क्लियर है. नाउ विल गो टू द कलेक्टिव्स. व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव्स? Collectives are larger group. Now look at this. Collectives are larger group compared to primary and social groups, whose members act in a similar and sometimes unusual ways. What does it mean? आप मूवी देखने के लिए गए, राइट? आप एक क्यू में मेंबर्स हैं, आपने क्यू देखी, क्यू में देर आर 10 मेंबर्स, ठीक है. आपने देखा होगा क्यू में जब लोग खड़े होते हैं तो एक जैसे आइडिया शेयर करते हैं कि यार गर्मी बहुत हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, राइट? यहाँ पे there is no deliberation, yani there is no intention to make a group, but the people those are standing in a queue, for example, for last 1 hour, right, they will definitely share some or two or three things similar, जैसे गर्मी बहुत हो रही है, लाइन बहुत बड़ी है, टाइम बहुत लग रहा है, ये ऑफिस वाले काम जल्दी से नहीं करते. इस तरह की बातें वी नॉर्मली डू व्हेन वी आर इन अ लाइन और व्हेन वी आर इन अ क्यू. मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन आया and he wants to breach this queue and he wants to get his work done initially, मतलब सबसे पहले अपना काम कराना चाहता है. तो यहाँ पे क्या होगा? All group member, they will come together and they will start bullying that person and they will start obviously protesting against him कि भाई आप आगे क्यों लग रहे हैं, आपको पीछे लगना है, राइट? तो ये भी एक तरह का ग्रुप ही है. यहाँ पर ऑब्वियसली इंटेंशन नहीं है कोई ग्रुप बनाने की, बट इट इज अ वेरी टेम्पररी पर्पस कि आपने इस ग्रुप को फॉर्म कर लिया, राइट? तो कलेक्टिव्स आर लार्जर ग्रुप whose member act in a similar and sometimes unusual ways. A list of collective would include street crowd watching a building burn. एक बिल्डिंग जल रही है, आप उसको मिलकर देख रहे हैं, then definitely that is also a type of group which is called collective. An audience at a movie, आपने मूवी में देखा होगा, आप कोई अगर मूवी देख रहे हैं, right, and there are hundred of participants, they are seeing this movie, so sometimes they share laugh. कोई सीन आएगा तो आपस में वो लोग हंसेंगे, राइट? आपस में किसी सीन को अप्रिशिएट करेंगे या किसी सीन पर वो कमेंट करेंगे. तो यहाँ पर क्या है? इंटेंशनली नहीं, राइट? यहाँ पर विदाउट नोइंग दे आर शेयरिंग दीज आइडियाज, दे आर मोर लेस सेम. तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट कि ऑडियंस अगर एक मूवी को देख रही है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रुप, बट यहाँ पर ऑब्वियसली पीपल दे आर नॉट नोइंग or unknowing, they form a group, right? इसी तरह से a mob of college student protesting a government policy and panic group feeling from danger, so that is the type of collectives. But the list would also include mass movement of individual who, though disperse over a wide area, display common shift in opinion or action. इसका मतलब क्या हो सकता है? I just tell you one of the thing about this. लास्ट एग्जाम्पल में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि देयर इज अ पॉलिटिशियन एंड ही सेड समथिंग अबाउट गर्ल्स, राइट? एंड ही मेड very derogatory
and at the same time very controversial remark against girls, right? तो क्या होगा, कंट्री का एक सेगमेंट होगा in Delhi, in different cities like in Mumbai, the people they will protest, or they will at least they will you know share their ideas, right? It can be a Twitter, it can be a social media, Facebook or Instagram. They will not praise, or they will test this person, politician. They will criticize him कि आपने उस किसी गर्ल्स के लिए इस तरह के रिमार्क दिए. यहाँ पर क्या हुआ, दे आर डिस्पर्स इन अ वेरी लार्ज एरिया एंड दे मे नॉट नो ईच अदर. बिल्कुल पॉसिबल है कि एक दूसरे को जानते नहीं है, डेफिनेटली, लेकिन दे आर शेयरिंग द सेम आइडिया. If there's a politician, he makes some remark, he makes some speeches, and some people they wonder, okay, it's a very good speech. So there will be a number of people dispersed in a country, they may appreciate and they may reject that idea. तो उनको भी collectives कहा जाता है, ठीक है? We call them collectives, ठीक है? Now the last part is categories, which is the largest type of group. सबसे बड़ा group है categories. Categories में क्या होता है? A category is an aggregation of individuals who are similar to one another in some way. राइट, यहाँ पे सिमिलैरिटीज को क्या हो रही है, कम होती जा रही है. प्राइमरी में सिमिलैरिटीज दे वर द हाईएस्ट, एंड इन द कैटेगरी सिमिलैरिटीज आर लीस्ट. फॉर एग्जांपल, द पर्सन those who live in New York, they are called New Yorkers. As I told you, Delhiites, the people from Bihar, the people from Punjab, right? What they call, we call them क्या, the people Indians, Indian, हम भारतीय हैं, तो we call them ना, हम भारतीय हैं, we are Indians. So what is it? It's a group. What type of group? It is called category. यहाँ पर similarity किस basis पर है कि we are Indian. There can be number of ways where the people they are different, but the similarity on the basis of they are from India. If a category has no social implication, then it only describe individual who share a feature in common and is not a meaningful group. तो क्या होता है, मान लीजिए किसी कंट्री में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, ठीक है, we just call कि भाई we are Indian. But मान लीजिए if people start taking pride, if the people start taking pride in it, okay, we are from Delhi, we are from Maharashtra, and be proud of it, ठीक है? तो what does it mean कि यहाँ पर categories में जो लोग हैं, they are dispersed across Delhi, they are dispersed across Maharashtra, Mumbai. They may not know each other, definitely, बिल्कुल मुश्किल है एक दूसरे के लिए एक दूसरे को जानना, but they are sharing that same pride. Okay, we are from Delhi, we are from India, we are from Mumbai. तो बच्चे we call them categories, right? यहाँ पर कुछ ऐसे examples हैं जो मैंने last class में दिए थे, but even in offline class also I demonstrated and I provided those examples. But since it's an online class and it's a recorded class, तो कुछ examples ऐसे हैं जो थोड़े controversial हो सकते हैं categories के cases को लेकर, उसको हम अभी यहाँ पर छोड़ देंगे. बट आई होप आप समझ पाए होंगे. कैटेगरीज में बड़े लेवल्स के ग्रुप्स आएंगे, कंट्री बेस्ड ग्रुप, दे कैन बी द एथनिसिटी बेस्ड ग्रुप. फॉर एग्जांपल, वी आर हिंदू, राइट, वी आर मुस्लिम, वी आर क्रिश्चियन. व्हाट इज इट? इट इज अ टाइप ऑफ कैटेगरी ग्रुप, ठीक है? तो आई बिलीव आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप सबको क्लियर होंगे. यस एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर. गुड. नाउ we will talk about the qualities of a group. Now, this one is the last part of the chapter number 1, which is called the qualities of group. यानी now we need to understand कि group में qualities क्या होनी चाहिए. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि qualities of group क्या हो सकते हैं. तो आप देखेंगे qualities of group, they are mentioned as interaction, goals, interdependency, structure and unity. यानी एक ग्रुप के लिए, एक आइडियल ग्रुप बनाने के लिए what it takes in order to make a group cohesive group, in order to make group a very lively and ideal and standard group, these qualities should be there, right? तो qualities का होना जरूरी है group के formation में. Now look at the interaction. What does it mean by this interaction? Interaction, obviously नाम से पता लग रहा है, group members exchange information with each other through both verbal and non-verbal communication. Is understandable. जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं through verbal and non-verbal communication. Verbal, as we know, it includes writing, it may include speeches or oral, or non-verbal, it may include kinesis,
It may include proximity, and there are different number of sign languages also. Yes, the group members they interact. Interaction is important. Okay? They work together to accomplish difficult tasks, but they sometimes slacked off when they thought other would not notice. देखो होता है क्या है, ऑब्वियसली इंटरेक्शन बताया गया है कि इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक ग्रुप के लिए आपस में मेंबर्स का इंटरेक्शन होना जरूरी है. इफ दे वोंट इंटरेक्शन, इफ दे वोंट इंटरेक्ट, इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन, आई शुड से कम्युनिकेशन, अगर ग्रुप्स के मेंबर्स में कम्युनिकेशन ही नहीं है देन डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होंगे. if there is no proper there will be conflict if there is no communication, if there is no communication, right? Group members taught each other new things and they touched each other literally and emotionally. Group interaction is as varied as human behavior itself. देखो क्या होता है जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं तो इट इज मेंशन कि ग्रुप्स में आप एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक दूसरे से चीजें सीखते हैं. ग्रुप इज अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, राइट? इफ यू आर वर्किंग इंडिविजुअली, आप अगर अकेले काम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स इज वर्किंग अलोन and on the other hand Mr. X is working with XYZ, then definitely in this case Mr. XYZ they will learn from each other, right? There will be some aspect जो लोग आपसे सीखेंगे and you will learn many things from others. Like if you are X, then definitely you may learn new things from X, Z and Y. In a way Y and Z can also learn from you. तो इससे समझ आता है कि ग्रुप इज अ लर्निंग प्रोसेस. ग्रुप में आप इंटरेक्शन जब करते हैं देन डेफिनेटली लोगों के बीच में लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज होती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक इंटरेक्शन. अब यहाँ पे बताया गया इंपॉर्टेंट है ये कि दो तरह के इंटरेक्शंस होते हैं. ये मैंने पीपीटी में एक्सप्लेन पूरा किया हुआ है विद नोट्स. आप इसे पीपीटी को बाद में रेफर कर सकते हैं, बट अभी मैं आई जस्ट टेल यू there are two type of interaction. One is called the relationship interaction and the second one is called the task interaction. Task interaction and relationship interaction they are very simple. भाई relationship interaction क्या होता है कि आप जब काम आप इंटरेक्ट कर रहे हैं यू आर कम्युनिकेटिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिलेशनशिप और rapport with each other. For example, if you ask your colleague, okay, we are going to watch this movie, would you go with me? We are going to go for lunch, right? We'll go for dinner, right? We will play this game. What is it? It is called the relationship interaction. The people they are interacting in order to increase their rapport to relationship. Another one is called the task interaction. But task interaction, okay, task interaction, can we please complete this file by Wednesday? What is it? अगर ये स्टेटमेंट या आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं अपने कॉलीग को कि यार ये फाइल को आपको वेडनेसडे तक कंप्लीट करनी है, राइट? व्हाट इज इट? इट्स अ टास्क इंटरेक्शन, यानी कि देयर इज एन कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क. तो वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप इंटरेक्शन एंड टास्क इंटरेक्शन दे प्ले very important role and they are complementary to each other, they are supplementary to each other. What does it mean? अगर आपका रिलेशनशिप इंटरेक्शन अच्छा है, हाईएस्ट है, then task interaction will also be very smooth. बट अगर आपका टास्क इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, देन डेफिनेटली द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर. तो इसलिए बोला जाता है कि रिलेशनशिप इंटरेक्शन को भी इंक्रीज किया जाए एंड दैट इज द ओनली रीजन वी हैव सीन कि द ऑफिसेस कॉर्पोरेट व्हाट दे डू, दे ऑर्गेनाइज पार्टीज, राइट? दे ऑर्गेनाइज ट्रिप्स so that people they can increase their mutual understanding, they can increase the relationship interaction apart from task interaction. Okay, so that is the first one is called task interaction. Now we'll go further. Okay, just a minute.
Now, goals. आवाज आ रही है? Is my screen visible, everyone? Hello, am I Yes, audible? sir. Okay, fine. Now look at the goals. Goals is a second quality of a group. What does it mean? देखिए, किसी भी ग्रुप का एक गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे. जब तक किसी ग्रुप के कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, गोल्स नहीं है, तो ग्रुप कोहेसिवनेस की बात करना बेकार है. ग्रुप इंटरेक्शन की बात करना बेकार है. इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गोल्स should be quantifiable and at the same time the group should be stated and communicated to each and everyone, right? So in groups, people solve problem, create products, develop standards, communicate knowledge, have fun, perform art, create institutions, and even ensure their safety from, from attacks by other groups. Groups make it easier to attain our goals. For this reason, much of the world's work is done by group rather than by individuals. What does it mean? What does it mean? It signifies the importance of group in order to achieve or attain the goals. So without group, there is no group. Without goals, there is no group. And why it is important to have group in order to achieve goals? Obviously, the people when they work together, definitely it is easier to attain goal compared to the person who is working alone, right? That is a very important objective कि goals का होना जरूरी है. अब गोल्स कई बार ग्रुप्स क्यों बनते हैं? आपने देखा होगा देयर आर द नंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स. ठीक है, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के फोन में व्हाट्सएप ग्रुप्स देखते होंगे. ठीक है, आप पूछें कि ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन क्यों किया है, एंड डेफिनेटली इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं. वन इज द फैमिली मेंबर इंटरेक्शन कि ऑब्वियसली डेली बेसिस पर इंटरेक्शन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज फैमिली इंटरेक्शन, तो फैमिली इंटरेक्शन को इंक्रीज करना, फैमिली रिलेशनशिप को इंक्रीज करना, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव. द अदर वन इज टू गेट इंफॉर्मेशन और टू बी इन्फॉर्म्ड किसी चीज को लेकर इंफॉर्मेशन. For example, if you have made your WhatsApp group, MBA Soul group, you must have been made number of groups. क्यों बनाए होंगे? क्योंकि each and every one you will be informed about the classes, about the notes, of the presentations, right? PPT आपको मिली नहीं मिली, classes कब है? That is another objective. कई ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड, राइट? क्यों? क्योंकि लगता है कि अपने रिलीजन्स के बारे में, अपने धर्म या अपने कल्चर के बारे में यू गेट इंफॉर्मेशन, एंड एट द सेम टाइम you also feel that we are sharing such information so that we can save ourselves from other type of groups. That is also type of one of the objective. तो कहने का मतलब ऐसे ये है कि ग्रुप्स को बनाया ही किसी गोल्स को अटेन करने के लिए जाता है. अगर आप कोई फ्रेंडशिप सर्कल देखें, इफ यू हैव मेड अ फ्रेंड ग्रुप बट देयर इज नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, आप फ्रेंड्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपस में किसी तरह का एसोसिएशन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वी विल से दैट दीज आर द पैसिव ग्रुप. पैसिव ग्रुप्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आइडिया शेयर नहीं हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स नहीं है. तो हो सकता है कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू मे स्टार्ट स्टॉपिंग और यू मे स्टार्ट लीविंग सच ग्रुप्स. व्हाट्सएप आपने छोड़ दिया, व्हाट्सएप ग्रुप आपने छोड़ दिया, या उन फ्रेंड्स के साथ मिलना बंद कर दिया क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा. तो इसलिए गोल्स का होना जरूरी है. नाउ कम टू द इंटरडिपेंडेंसी. नाउ व्हाट इज इंटरडिपेंडेंसी? इंटरडिपेंडेंसी अमंग द मेंबर्स, अमंग द मेंबर्स. जब तक लोग इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे, डेफिनेटली ग्रुप कोहेसिवनेस नहीं इंक्रीज होगा. एंड एज आई already told you, group cohesiveness क्या होता है in the classes. In the earlier class I told you the group cohesiveness is something that when the people they work together and they share the highest level of bond, right? ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब है कि ग्रुप्स के मेंबर आपस में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कोहेसिवनेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉन्ड शेयर करते हैं. ठीक है, उनके बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, उनके बीच में जो भी काम होता है म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू होता है. देन वी विल को कॉल इट द ग्रुप कोहेसिवनेस. उसके लिए बच्चे इंटरडिपेंडेंसी का होना जरूरी है. किसी ग्रुप में अगर लोग इंटरडिपेंडेंट नहीं है और यू कैन से आत्मनिर्भर है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की जरूरत नहीं होगी. जब एक दूसरे की जरूरत नहीं होगी तो आपने ग्रुप क्रिएट ही क्यों किया? यस और नो? यू मेक ग्रुप्स ऑब्वियसली बिकॉज यू आर इंटरडिपेंडेंट, because you want to go to a party, you want to go to on a trip. Definitely that is the interdependency. अकेले नहीं जा सकते मूवी देखने के लिए. That is the reason that you have made a group of friends. Okay, you will go and you will enjoy movie only when you will be together. That is a perceived idea.
ठीक है, that is called the interdependency. The state of being dependent to some degree on other people as when one's outcome, action, thoughts, feeling, and experience are determined in whole or in part by others. उसे हम कहेंगे डिपेंडेंसी. जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स, थॉट एंड एक्सपीरियंस पर रिलाई करते हैं, उनके आउटकम और एक्शन पे रिलाई करते हैं. When people join group, they soon discover that they are no longer masters of their own fate. जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, be it the friend group, be it the task group, वर्क प्लेस पर आपका कोई ग्रुप है, आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते, अकेले पॉसिबल भी नहीं, एट द सेम टाइम वो डिजायरेबल भी नहीं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी सम डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, तभी तो ग्रुप बनाया ना. इन सच सिचुएशन मेंबर आर ऑब्लिगेटेड और रिस्पॉन्सिबल टू अदर ग्रुप मेंबर्स फॉर दे प्रोवाइड ईच अदर विद सपोर्ट एंड असिस्टेंस. ऑब्वियसली ग्रुप्स बनाने का ही एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि आप इंटरडिपेंडेंसी है आपके बीच में, ठीक है. और वो इंटरडिपेंडेंसी क्यों है? बिकॉज पीपल मेंबर आर ऑब्लिगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर ग्रुप मेंबर एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस. आपके फ्रेंड्स का अगर कोई इमोशनल इश्यूज है एंड ही विल कॉल यू, इफ ही कॉल्स यू then definitely why he is calling you in first place? Because obviously he needs some support from you, because there is an emotional dependency on each other. And if you have if you would have any problem, emotional problem or financial problem, you would call your friends. Definitely why? Because you have some degree of dependency on your friends. Okay, so dependency is important. Structure, what does it mean by this structure? The last portion is structure. What is called structure? See, structure is something, इसका मतलब है groups are not random. There will be some structure in a group. Groups are organized. ठीक है. हाँ, ये जरूर है, फैमिली ग्रुप्स और फ्रेंड ग्रुप्स दे आर नॉट मच ऑर्गेनाइज. फ्रेंड्स ग्रुप में होता है ना कि कोई ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. कौन हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी का पर्सन है, राइट? who will support the idea of other, who will be dominate, who will dominate, who will be submissive, राइट? इतना क्लियर कट नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता फ्रेंड ग्रुप्स में. बट व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप? वहां पे तो बहुत क्लियर होता है ना कि हु इज योर सीनियर, हु इज योर ऑफिसर, सीनियर, जूनियर, राइट? So there should be a pattern, right? That is another thing कि एक पैटर्न होना चाहिए. इवन फ्रेंड ग्रुप्स में भी आप देखेंगे, although it is not stated, it is not official, but there will be definitely a person who will be dominated and there will be number of individual, they will be submissive. वो हर बात मान लेते हैं. एक होता है जो ग्रुप को पूरी तरह से रन कर रहा है. यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, although it is not defined structure, right? But in case of the organizational group, there are the defined norms, who will report to whom, right? There will be the accountability and responsibility among the member. ठीक है, तो इट मींस कि स्ट्रक्चर भी एक ग्रुप का एक डिजायरेबल पार्ट है. अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पे क्योस होगा. कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आंसरेबल है, वो पता नहीं लग पाएगा. ठीक है, तो ग्रुप मेंबर आर नॉट कनेक्टेड टू वन अदर एट रैंडम बट इन ऑर्गेनाइज एंड predictable pattern. These regularities combine to generate group structure, the complex of roles, norms, and inter-member relationship that organize the group. As I told you, roles and norms lie at the heart of the group's most dynamic process. किसके क्या रोल्स होंगे और क्या ग्रुप को रन करने के नॉर्म्स होंगे, ठीक है, उसी से ग्रुप पूरा फंक्शन होगा और वो इस स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है. ऑब्वियसली किसका क्या रोल होगा, किसको क्या काम करना है, कौन किस काम को ऑथराइज करेगा, क्या द नॉर्म्स एंड सब नॉर्म्स, राइट? तो ये किसी ग्रुप को रन करने में हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर. When people join a group, they initially spend much of their time trying to come to terms with the requirement of their roles. Definitely initially problem होती है, right? But over the time you adjust with the group. आपको पता लग जाता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका रोल क्या है, सब्जेक्टिव रोल क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव रोल क्या है आपका. ठीक है, तो that is something which is called structure. Unity, which is the last component or the last quality of a group. Unity, ग्रुप मेंबर्स के बीच में यूनिटी. यूनिटी कब आएगी? मैंने पहले क्लासेस में भी बताया था, यूनिटी इज अ सब प्रोडक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी.
यूनिटी इज अ सब प्रोडक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। अगर लोगों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है तभी यूनिटी आएगी। लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओनली देन यूनिटी विल कम। द पीपल दे आर नॉट डिपेंडेंट, यूनिटी कैसे आएगी? तो इंटरडिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिटी इज अ सब कंक्लूजन और इट इज आउटकम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ये आपको समझना है। A group is not just the individual who compose it, a group is a unified whole. It is an entity formed when interpersonal forces bind the mass members together in a single unit with boundaries that mark who is the group and who is outside of it. ठीक है? तो डेफिनेटली यूनिटी से डिसाइड होता है कि ग्रुप के लोग कौन है और ग्रुप के लोग कौन नहीं है। आपने देखा होगा चार फ्रेंड्स बैठे, ठीक है, और दो क्लासमेट, मतलब 6 लोग बैठे हैं एक जगह पर। The way they will share their bonds, these four, एक दूसरे को बात करने का तरीका बहुत इनफॉर्मल है। दे आर लाफिंग, दे आर टीजिंग, दे आर शेयरिंग देयर वाटर, दे आर शेयरिंग देयर फूड एज वेल, राइट? These four members. Now, these two classmates, they are also sitting there. When these four members they interact with these two members, the the level or the type of tone changes. Now they are more formal when they are talking to these two members. होता है ना, चार फ्रेंड्स बैठे हैं, आपके बराबर में दो आपके क्लासमेट्स हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स बट दे आर जस्ट क्लासमेट्स। इफ यू टॉक टू देम देन डेफिनेटली आपका जो टोन होगा वो अब अलग होगा। यानी कि जो ग्रुप यूनिटी है वो डिफर करती है। यूनिटी ऑब्वियसली इट डिफरेंशिएट द मेंबर ऑफ ग्रुप्स एंड दोज हु आर नॉट मेंबर ऑफ द ग्रुप, राइट? इससे आपको पता लग जाता है कि कौन ग्रुप का मेंबर है और कौन ग्रुप का मेंबर नहीं, ठीक है? Now, the quality of groupness or solidarity is determined in part by group cohesion. जैसे मैंने बताया था पहले, group cohesion is very important और group cohesion से देखिए दो चीजें डिसाइड होंगी, इंटरडिपेंडेंसी डिसाइड होगी, और जब इंटरडिपेंडेंसी डिसाइड होगी देन डेफिनेटली यूनिटी तब आएगी जब आपका ग्रुप कोहेजन हाईएस्ट लेवल का होगा। ग्रुपनेस इज आल्सो रिलेटेड टू इनिशिएटिविटी। नाउ व्हाट इज कॉल्ड इनिशिएटिविटी? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल मैचेस देखे होंगे, राइट? आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे। Have you ever observed कि some of the time the members or the participant audience, those who are sitting in there watching television, or sorry, match, live match, and they are the part of the match, right? Stadium में. So what they do, sometimes they start their flashlight of their mobile phone. देखा होगा मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट सब लोग ऑन कर लेते हैं, और आपने देखा होगा इफ 2 और 3 कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन थोड़ी होती है कि हाँ नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फ्लैशलाइट एंड यू विल फ्लैश इट टुवर्ड द ग्राउंड। नो, यहाँ पे कुछ लोग करेंगे, देन लोग क्या करते हैं उस चैन में वो करना शुरू कर देते हैं। एंड इफ यू हैव सीन कि समवन इज कॉलिंग भारत माता की जय, द एंटायर स्टेडियम दे विल फॉलो देम, और क्या होगा, एक तरह की वेव इनिशिएट होगी। दैट इज कॉल्ड द इनिशिएटिविटी। उसको इनिशिएटिविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, द स्पेक्टेटर एट अ फुटबॉल गेम मे सीम टू बी disorganized mass of individual who happen to be the same place at the same time, but the tendency of the spectator to shout the same cheer, express similar emotions and move together to create a wave gives them initiativity. इसको इनिशिएटिविटी बोलते हैं, we call them initiativity. अब हम कह सकते हैं जो ये जो ग्रुप है ना, आप बोलेंगे सर ये कैसा ग्रुप है? ये है किस तरह का ग्रुप है? कैटेगरीज। दिस वन इज कॉल्ड द कैटेगरीज, ठीक है? यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग्स, दे आर चेयरिंग इन अ सेम मैनर ओनली बिकॉज दे सपोर्ट अ पर्टिकुलर टीम, राइट? तो वी कॉल देम, इस तरह का जो एसोसिएशन है वी कॉल इट द इनिशिएटिविटी, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर है आप सबको अच्छे से। Yes, please let me know. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have number of students here. There are total how many? 7 students. Yuvraj, Suresh, Devanshi, Prerna, Abhishek, Shweta, and Sunidhi. सबको समझ आ रहा है? Yes, बताइए। sir.
अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो Yes, ये जो sir. रिकॉर्ड, okay, the first chapter we have completed the first chapter. Now we are moving to the second chapter. And please, I request you everyone, please listen it very carefully. अगर आपको कोई डाउट है बीच बीच में, प्लीज इंटरप्ट मी इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए, इस तरह का इंप्रेशन मत रखना कि हमें सिर्फ एक क्लास लेने के लिए लेनी है. डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली 4 hour टाइम इज अ वेरी क्रूशियल फॉर अस, राइट? आप अगर यहाँ पे क्लास में इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स दैट यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. डेफिनेटली दैट इज द ओनली thing on the basis of which I am requesting you all, please listen it very carefully. ध्यान से समझिए. अगर आपको लगता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा है या मुझे एग्जाम्पल्स कम देने चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन बिटवीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2, which is studying group. Studying group. Okay, the first chapter was the introductory chapter. Now the second chapter is studying group. What does it mean by this studying group? So there has been historical analysis of group are insightful, but they are all based on the personal opinion rather than scientific research, right? So it is very important कि groups को जो study किया जाए वो scientific base पर किया जाए, right? And there are the number of questions जो आपको you can get your answer if you only observe groups. So observing group is a very important part, which is called the studying group. There are the number of questions which can be answered thoroughly through scientific research only. कैसे? Is a key to controlling people controlling their group. यानी अभी तो हमने देख लिया ग्रुप का इंट्रोडक्शन. नाउ वी नीड टू स्टडी ग्रुप, हाउ मेंबर दे बिहेव, हाउ दे बिहेव, मेंबर बिहेव, how we can control a group. Can we control a group by controlling members? That is another observation. Why do groups that are initially unified eventually fall into disarray? कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बहुत यूनाइटेड है शुरू शुरू में, बट ओवर द टाइम उनमें सब ग्रुपिंग होती गई, और सब ग्रुपिंग होने के बाद हो सकता है द ग्रुप they dissolve over a time. Why it is so? Why do group members they member act, feel and act, think the way they do? Yani, what is their way of working in a group? Working in a group. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बचे. You can get you can get these answers only by explaining or studying a group process. So it is very important कि आपको ग्रुप को स्टडी करना है. ग्रुप को स्टडी करने के बाद ही we can understand the different types of questions. We can answer these questions in a more particular way. Now, so there are two types of studying group. Groups को study दो तरह से किया जा सकता है. One is called the observation method, and the second one is called the questioning method. So we will study one by one. Questioning method या observation method. There are two types. Observation. नाम से पता लग रहा है. Researcher who study group often begin with observation. So observation is obviously the very initial type of part to study. Initial to study a group. Right now, it includes how group members interact, perform their tasks, make decisions, confront other groups, seek new members and expel old ones, accept direction from their leaders. तो ये जितने भी ग्रुप्स के डायनामिक्स हैं उनको आप ऑब्जर्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड. So the very first type of formal observation was done by the William Forte White in 1943. He used this observation in his study and illustrated some key features of observational measures. So he was the first person. He initiated with the formal observation, which is a documented. Okay? He studied number of US based people in Boston area, and he studied their working, how they behave in a group and how they interact with each other in 1943. So Whitey, like all researchers, made a series of decisions as he planned and conducted his studies. So he made number of decisions. He's observed the entire group. जो मैंने आपको बताया Boston अमेरिका में. There were some limitation of his studies. ये why we are talking about the William Foote White even in revision class, because his study is actually very very important to demonstrate what are the different types of observations. ठीक है? So
he observed that there was some limitation of his study, such as he did not use trained objective observers. So observation करने के लिए there should be the observers, right? There must be a trained observer, but he did not do it. He did himself. इन्हें ऑब्जर्वेशन का काम किया था वो this person William Fortified. He was a well-known researcher. He is a well-known researcher in this field in the HRM, the group dynamic process, right? He was the one who started this observation. He also decided to take part in group activity. यहाँ पे क्या हुआ देखो, participant observation. We call it a participant observation. What does it mean by this participant observation? कि जिस ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसका पार्ट भी हो, आप उसका पार्ट भी हो, right? For example, if I'm sitting, if I'm sitting in a room and I'm observing the activity on TV and the footage I'm getting from CCTV camera, okay, and observing the activity or number of people. So the very first question is, am I participating? Am I the part of this group? No, I'm the outsider. मैं एक रूम में बैठकर टीवी पर सीसीटीवी फुटेज को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट? और ऑब्जर्वेशन किसका कर रहा हूँ? लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ. तो ऑब्वियस है बच्चे, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आई एम आउटसाइडर. ठीक है? बट हाउ विलियम फुटे वाइटी ही स्टार्टेड दिस ऑब्जर्वेशन, ही स्टार्टेड द participant observation. It means he become the part of the group and then he started observation. ठीक है? तो ये उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्वेशन किए. नाउ he did not count time or methodically track the Norton's actions. Instead, Norton was the name of that group, right? जिस ग्रुप को उन्होंने स्टडी किया, बोस्टन बेस्ड ग्रुप, the name of the group was Norton's. Instead, he described what he observed in his own words and tried to record. अब देखोगे, he was a participant. He became the participant of the group, and at the same time, what he did, he also write it down whatever he observed in the group in its own words. इसको कहेंगे बच्चे सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा करो, मार्केट में देख कर आओ लोग किस तरह से स्पेंडिंग कर रहे हैं, दिवाली के टाइम पर किस तरह से स्पेंडिंग करते हैं. तो मैंने आपसे कहा कि कोई क्वेश्चनर मत बनाना, किसी तरह का क्वेश्चनर नहीं बनाना, जैसे आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और आकर मुझे अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है. अब यहाँ पे क्या है, ये क्या ऑब्जेक्टिविटी है? नहीं, देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी. बट आई फील, अब मैं फील कर सकता हूँ, अच्छा है बुरा कैसे भी फील कर सकता हूँ, मैं उस तरह का ऑब्जर्वेशन सामने वाले को दे रहा हूँ. तो व्हाट इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती? कोई सिलेक्टेड एमसीक्यूज होते, एक लिकर्ट स्केल होता, जिस पे आपको 1 to 4 तक क्या करना होता, सेलेक्ट करना होता. ठीक है? लोगों का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हाईली कोऑपरेटिव, हाईली नॉट कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव, लोग स्पेंडिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बार्गेनिंग कितना कर रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ लिकर्ट स्केल मैं उसको क्या करता, अगर लिकर्ट स्केल पर सेलेक्ट करता, तो ये होता ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. जो भी मैं देख रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने ओन वर्ड्स में. तो यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट पता लगी. He was doing the participant observation with subjectivity. Subjective का मतलब उनके खुद के impacts, अपने खुद के उनके words, उनकी thinking जो उस observation में include हुई है. That is called the subjectivity. Objectivity क्या होता है? MCQ paper is objective. आपको 1 to 4 assign करना है. तो obviously यहाँ पे आपकी जो thinking है उसका biasness कम हो जाएगा और जो आप real picture देख रहे हैं definitely वो ज्यादा impact करेगी आपकी study को. ठीक है? तो he did that. Now, on the basis of his study, there is another term which has come into the light, which is called the Hawthorne effect. एक impact कहा जाता है जिसको Hawthorne effect कहा जाता है. जो उनकी स्टडी में for the first time he was the one जिनको मिला, although उसका नाम पहले Hawthorne effect नहीं था. ठीक है? What is called the Hawthorne effect? अच्छा, shall we take 5 minute break? एक ब्रेक लें 5 मिनट का. ठीक है? तो we will continue at 12:15. ठीक है?
हेलो, shall we start करें? हेलो, am I Yes, sir. audible? Yes, sir. ठीक, fine. Okay, so we talked about this observation method, and we got to know the William Forte White was the first person. He started the observation, and what he started the observation, he started a US based one of the group of friends in the Boston street, and the name of the group was Norton. And the type of study he started was the participant observation. Participant observation का मतलब मैंने बताया, इसका मतलब था कि जब जो ऑब्जर्व कर रहा है वही उस ग्रुप का मेंबर बन जाए एंड ही स्टार्ट ऑब्जर्विंग विद इन द ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर ही बैठकर आप ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देर आफ्टर मैंने बताया कि नॉर्टन का जो स्टाइल था ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, दैट वाज कॉल्ड द सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग इन हिज ओन वर्ड, एंड he wrote everything and record in his own way, right? इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, now Hawthorne effect. Hawthorne effect is a very important implication in HRM, in group dynamic also, and William Forte Whiteley was the first person who introduced the idea of Hawthorne effect. Although this was not the official name back then, Hawthorne effect इसका official name नहीं था, but he observed this effect in his study of this group observation. What he found out, so he found out कि Hawthorne effect होता क्या है। Tendency for individual to act differently when they know they are being observed is often called the Hawthorne effect, right? तो अगर मैं बात करूं विलियम फोटे वाइटी की, so he was the one, he observed that group जो मैंने आपको अभी बताया, और जब उन्होंने ग्रुप को ऑब्जर्व किया तो the members of the group, the other member of the group, those who were the main participant, they were aware of the fact that they are being observed, यानी मेंबर्स को पता था कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। द मेंबर दे न्यू दे आर बीइंग ऑब्जर्व। तो उस केस में विलियम फाइटेबोटी विलियम फोर्टिफाइड ही गॉट टू नो कि जब मेंबर्स को पता लगता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, व्हाट दे डू, दे चेंज देयर वर्किंग स्टाइल। अगर आपको पता लगे कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट, तो आपकी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं ऑल्टर्ड होंगी, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल होंगी, ओरिजिनल कम से कम होंगी। तो इस तरह के इम्पैक्ट को बच्चे लेटर ऑन दिस टाइप ऑफ इम्पैक्ट वाज कॉल्ड हैव्थॉर्न इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ एंड दिस स्टडी was done by Elton Mayo. Elton Mayo was the one who named this impact as Hawthorne effect. जैसे मैंने बताया, विलियम फोटे वाइट was the one जिसने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, बट एल्टन मायो was the one जिन्होंने अपनी स्टडी में इसको एक नाम दिया which is called the Hawthorne effect. Elton Mayo studies productivity in the workplace by systematically varying a number of features while measuring the workers' output. So Elton Mayo, he initiated a study in America, and in one of the place wherein the factory was situated was Hawthorne. उस जगह का नाम Hawthorne था, right? वहां पर उन्होंने इस स्टडी को किया और वहां पर देखा कि वर्कर्स की आउटपुट में किस तरह से चेंजेस आता है। सच एज व्हाट ही डिड, उन्होंने जो लाइट्स होती हैं, ल्यूमिनेशन होता है, यानी जो लाइट्स वर्क प्लेस पर होती है, उनको कभी क्या कर दिया, डिम कर दिया, राइट, कभी डिम कर दिया, और कभी उन्होंने उन लाइट्स को ब्राइट कर दिया। Why did he do so? He did, obviously he wanted to know कि लाइट्स को डिम करने और लाइट्स को ब्राइट करने पर लोगों के, यानी वर्कर्स के आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? एंड ही आल्सो डन नंबर ऑफ experiment in this Hawthorne experiment, and he manipulated the feature of work situations such as lighting in the room, duration of the rest period. So what he got the idea कि जब members को पता लगता है कि उनको observe किया जा रहा है, तो what they do, they starting working harder. Obviously, it's a natural phenomena.
कि जब आपको पता लगेगा कि आपको कोई सामने आपके ऊपर कोई बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, देन डेफिनेटली आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो बच्चे इस इम्पैक्ट को वी कॉल इट हैव थ्रोन इफेक्ट। इसको मैंने अपनी डिटेल पीपीटी में बताया था विद एग्जांपल, नंबर ऑफ एग्जांपल आई हैड गिवन, बट आई बिलीव आपको हैव थ्रोन इफेक्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये समझ आया कि जो ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पता होता है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर इन द पार्टिसिपेंट दे नो कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। और अगर ओवर्ट ऑब्जर्वेशन होगा देन डेफिनेटली वहां पे हैव थ्रोन इफेक्ट होने की चांसेस भी ज्यादा होंगे। ये बात क्लियर है। इसलिए सजेस्ट किया गया कि ओवर्ट ऑब्जर्वेशन के अलावा देयर कैन बी अनदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें हैव थ्रोन इफेक्ट को कम किया जा सकता है, विच इज कॉल्ड कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। छुप कर, आपको पता ही ना लगे कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। तो अभी तक हम तीन तरह के ऑब्जर्वेशंस पढ़ चुके हैं। वन इज ओवर्ट, सेकेंड वन इज अ कोवर्ट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आई बिलीव आपको ऑब्जर्वेशंस क्लियर होंगे सारे, राइट। नाउ लुक एट दिस, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस योर स्टडी कैन बी बाइफरकेटेड एज सब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो मैं उसी के ऊपर अब बात करूंगा। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बताया, इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, राइट। ये क्या होती है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन? इज व्हाट? नाउ लुक एट दिस, it offers researchers a way to increase the objectivity of their observation. Observational methods classify each group behavior into an objectively defined category. First, they decide which behavior to track, then they develop an ambiguous description of each type of behavior they will code. क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि आप एक ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं, राइट, बट आप चाहते हैं कि इस ग्रुप को ऑब्जर्व करते वक्त जो ऑब्जर्वर है उसके बायस होंगे कुछ ना कुछ। भाई आपकी भी तो कोई थिंकिंग होगी ना, बायसनेस होगा आपका कुछ ना कुछ। उस बायसनेस को लिमिट करना है जिससे कि आपकी स्टडी में उसका इम्पैक्ट ना दिखाई दे। मान लेते हैं, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू वांट टू ऑब्जर्व स्मोकर्स, दोज हु स्मोक। आपको उनको ये ऑब्जर्व करना है कि स्मोक क्यों करते हैं, किस तरह की सिचुएशन में वो स्मोक करते हैं। एंड व्हेन यू वेंट टू ऑब्जर्व देम, आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है दैट यू हेट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, यू कांट स्टैंड विद अ पर्सन हु स्मोक्स, राइट। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बाइसनेस है वो आपकी स्टडी में रिफ्लेक्ट हो सकती है। आप कहीं ना कहीं ये पेंट कर सकते हैं, यू कैन पेंट अ सिचुएशन इन अ वे कि जो जो स्मोक कर रहे हैं वो गलत लोग हैं, या उनको उनकी सिचुएशंस को आप एग्जेगरेट करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है ना, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं। आपकी थिंकिंग किस तरह से इम्पैक्ट डालेगी। तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू लिमिट सच बायसनेस इन अ स्टडी, इसलिए इट इज ऑलवेज डिजायरेबल कि स्टडी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिफिएबल होनी चाहिए, जहां पर आपके बायसनेस के चांसेस कम से कम हो जाएं। और वो हो सकती है ओनली इन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। इसमें आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ओके, यू वांट टू ऑब्जर्व दोज हु स्मोक, राइट, ओके, सो यू मेक अ पॉइंटर्स, ठीक है। इफ दे स्मोक 10 cigarettes, more than 10 cigarettes, then opt for this or choose this option. If you feel 5 cigarettes but lesser than 10 cigarettes, you will observe this. If lesser than 5, then you will opt for this option. And if it is more than 10, कैसे भी हो सकता है, more than 10, then you will observe this. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब आपको ये नहीं बताना कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत कम स्मोकिंग करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, बहुत कम स्मोकिंग करना ऑब्वियसली आपके बाइसनेस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। आप हो सकता है कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है,
you have never smoked in your entire life, but if you see someone that someone is smoking only one cigarette, तो आप तो उसको भी बड़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास क्वांटिफिएबल स्टडी का होना जरूरी है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा हो, सब्जेक्टिविटी कम हो। सब्जेक्टिविटी का मतलब अपने खुद के ओपिनियंस, राइट? तो दैट इज द रीजन द क्वांटिफिएबल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। मैंने पूरा एक बड़ा एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। यस बच्चे? Yes, sir. ओके। फर्स्ट दे डिसाइड विच बिहेवियर टू ट्रैक एंड दे विल कोड इट। जैसे मैंने बताया ना, आप कोड कर देंगे कि या तो फर्स्ट ऑप्शन, या सेकंड ऑप्शन, या थर्ड ऑप्शन, या फोर्थ ऑप्शन। अगर कोई ये करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन, ये करेगा तो सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, आपकी जो सॉरी सब्जेक्टिविटी है, वो लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट, यूजिंग दीज बिहेवियरल डेफिनेशन एज अ गाइड, दे नोट द अकरेंस। मैंने बताया कि ऑब्वियसली कितनी बार सिगरेट्स पी रहे हैं, दैट इज द अकरेंस and frequency of these targeted behavior as they watch the group. This type of research would be quantifiable study because it yields numerical results. आपके पास numerical results आ जाएंगे। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ज्यादा सिगरेट्स पीता है, कम पीता है, बिल्कुल नहीं पीता। ज्यादा पीता है का मतलब भाई क्या है? It is very ambiguous, sorry. It is very not clear in front of you that what does it mean by ज्यादा सिगरेट पीना, he smokes a lot. It doesn't make any sense. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टडी को क्वांटिफिएबल किया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन, एज यू कैन अंडरस्टैंड, दिस कॉल द क्वालिटेटिव स्टडी। यहाँ पर जो नॉर्टन की स्टडी हुई, डन बाय द विलियम फिट वाइट फुट वाइट, he was the one who studied the objective studies, sorry subjective study. He made this subjective study, मैंने बताया ना ऊपर। what he did, he write it down in his own words, right? He took notes and reflected on what he saw before drawing general conclusion about the group. Qualitative method generate data, but the data describe general qualities and characteristics rather than prescribe quantities and amount. वही चीज यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं पता लगती, यहाँ पे आपको क्वालिटी पता लगती है, ज्यादा कम, right? Such kind of qualities. Such qualitative observation method require an impartial researcher who is keen observer of groups. यहाँ पे जरूरी है कैसा होना चाहिए ऑब्जर्वर, इम्पार्शियल होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा, यानी कि जब जब ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, द ऑब्जर्वर शुड बी ऑब्वियसली शुड बी ओपन माइंड कि ठीक है, जो स्मोकिंग करता है, आई डोंट डू स्मोकिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इफ आई फील कि मैं स्मोक नहीं करता तो सामने वाला कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। तो दैट इज समथिंग विच इज दैट द पर्सन इज पार्शियल टुवर्ड दोज हु स्मोक्स, राइट? If researchers are not careful to remain objective, अगर वो partial रहते हैं, they may let initial implicit expectation shape their reports. Definitely, ऐसे लोग, अगर आप इस तरह की रिसर्च करेंगे जिसमें impartial आप होंगे, then definitely आपकी जो स्टडी है वो true picture reflect नहीं करेगी। तो that is a qualitative study. So I believe I have explained each and everything about the observations, Yes, sir. right? So now come to the chapter number 3, which is group conflict. Now we are talking about the group conflict. Group conflict is the situation wherein the members, they do not work together in a peaceful environment. They quarrel, they fight. Yes. सर हमारी हमने एसएलएम पढ़नी है। बेसिकली एसएलएम में अगर हम लेसन 2 देखेंगे तो उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अवेयरनेस या फीडबैक के बारे में बात की गई है। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ प्रेरणा बोलो। सर हमें एसएलएम जो है हमारी, उसमें जो चैप्टर 2 है उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अवेयरनेस या फीडबैक के रिगार्डिंग बात की है। तो मतलब हाँ प्रेरणा, जो आपके मैंने जो आपको लेसन्स कराए हैं वो आपके एसएलएम के बेस पर नहीं है। व्हाट इज द मीन? इट मीन्स कि जो आपका एसएलएम है उनके चैप्टर कोडिंग्स हैं वो अलग हैं, और जिस चैप्टर कोडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दे आर डिफरेंट, ठीक है। एज ए टोल्ड यू इन अ वेरी इनिशियल ऑफ दिस क्लास कि मैं आपके
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एट द सेम टाइम विच आर नॉट मेनली एंड रेडिली अवेलेबल इन योर एसएलएम, मैं उनको पहले कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपका जो मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस है वो कवर हो जाए विद दिस रिवीजन। ठीक है, ओके सर, ओके। ये बात मैंने क्लासेस में भी पहले बताई थी कि जो आपका एसएलएम का जो कंटेंट है वो कुछ हद तक मेरे ओपिनियन में उस स्टैंडर्ड में नहीं था। दैट इज द ओनली रीजन आई हैड टेकन वन ऑफ द फॉरेन ऑथर बुक्स एंड आई हैव मेड ऑल दोस नोट्स, प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज आल्सो फ्रॉम दोस थिंग ओनली। हाँ, जो टॉपिक्स आपके एसएलएम में है उन टॉपिक्स पे मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। रीजन इज क्योंकि वो एसएलएम में ठीक ठाक एक्सप्लेन किए गए हैं, पर जिन टॉपिक्स पे एसएलएम पे बात नहीं की गई है उनको मैंने मेनली यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स पर हम आएंगे। सो वी विल नाउ टॉक अबाउट द ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट? Group conflict is a situation when the members they fight, right? There's arguments between members when they argue, and there's a fight among the members, right? And no peaceful environment, no peaceful environment, right? So such situation is called the group conflict process. So obviously group conflict arises and it's very natural and it is cycling also. What does it mean by it's a cycling process? Cycling process का मतलब है कि group conflict होना it's a natural process and it occurs over a period of time. यानी कि group cohesiveness होगा, right? Group peaceful होगा, but after some time there will be some escalations. Situation will escalate, right? And when the situation will escalate, there will be a disagreement. Thereafter, situation will escalate. The people will fight, right? Obviously, they argue, and thereafter there will be peace or at least negotiation. Negotiation will start. Negotiation will start afterward, right? So what is it? Why we call it a cycling process? क्योंकि ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होना ये नेचुरल है, इट्स ए ह्यूमन फिनोमिना। ग्रुप में लोग काम साथ करेंगे तो किसी ना किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। तो in this chapter number 3 we are going to talk about those things wherein we will try to explain, we will try to understand what is called the group conflict. Now look at this. Group conflicts क्या है? Group members they do not always get along well with one another, which is a natural process. Even in the most serene circumstances, the group atmosphere may shift rapidly. Definitely, चाहे friend groups हो, चाहे working conditions हो, task group हो, किसी भी तरह के ग्रुप्स में मेंबर्स के बीच में किसी तरह की एडवर्सरी डेवलप हो सकती है। When conflict occurs in a group, the actions or belief or one or more member of the group are unacceptable to and resist by one or more member of the group members. देखो नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब 4 लोगों का फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है बट वन ऑफ द मेंबर he start pestering everyone, right? He may start dominated everyone. तो क्या हो सकता है? When he is doing so for a long time, हो सकता है these three they are accepting his behavior, they are not making any point against him, they are not resisting against him. But definitely there will be a time when one of the two member of these three members they will resist, they will start questioning his dominancy on a group, and there will be a conflict. तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की इनिशियल प्रोसेस इसी तरह से होती है कि जब आपके बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि व्हाई डू एलाइज इन अ ग्रुप समटाइम टर्न इनटू एडवर्सरीज? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच एडवर्सरीज? कि ग्रुप में किस तरह की एडवर्सरीज क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच एडवर्सरीज, राइट? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन लेंथ। इसके बारे में हमने बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग चीजों पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ्लिक्ट इट मे ओवर रिसोर्सेस, इसके नोट्स मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे। कॉन्फ्लिक्ट मे ओवर रिसोर्सेस, conflict may over position, conflict may over personal liking and disliking, right? We had done, ये हमारी रामनवमी वाली जो क्लास हुई थी ऑफलाइन क्लास, इसमें मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था एंड आई हैड डिक्टेटेड वेरी गुड नोट्स
on the type and sources of conflicts. ठीक है, तो conflict क्यों होता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. The conflict process begins when the routine course of event in a group is disrupted by initial conflict. So initial conflict is the very first stage. Conflict grow as a persuasion gives way of arguing emotion take the place of logic, and once ununified groups split into faction and coalitions, right? So when people they don't talk, or they have no such logic, or no logic is no longer is the main evident factor in a group, but emotions take place. Emotions take place obviously when you are liking something or disliking something, and you have a very strong commitment toward it. तो वहां पे आपके क्या लॉजिक्स क्या होते हैं, लॉजिक्स कहीं ना कहीं आप लॉजिक्स को दूर रख देते हैं. तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं. The period of conflict escalation is in most cases followed by reduction in conflict through conflict resolution. तो यहाँ पे conflict resolution cycle बताई गई है कि there will be initial conflict. Initial conflict क्यों होगा? Because of disagreements. And when this disagreement will escalate, there will be the highest level of conflict escalation. एस्केलेशन के बाद ही आफ्टर सम टाइम बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ग्रुप में 2 लोग या 3 लोगों के बीच में बनती नहीं है. दे हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, एज वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द केस स्टडी बिटवीन स्टीव जॉब्स एंड जॉन स्कली. John Scully and Steve Jobs की case study में we got the insight about how conflict started in the very early of the 1980s, and initially they were good friends, and Steve Jobs was the one जिन्होंने John Scully को Apple Inc के बोर्ड में इंट्रोड्यूस किया था. He was the only one जिसने उनको इंट्रोड्यूस किया था. Over a period of time, within 2-year time period, they had their differences in opinion, and because of the differences in opinion, that there was a disagreement, and because of disagreement, they started conflicting with each other, and they started making personal remark also. What happened in the later stage when the conflict was at peak? Ultimately, Steve Jobs had to resign and he left Apple Inc. in 1993. Yes, in 1993 he left Apple Inc. Apple company, right? John Scully was the CEO of Apple at that time. So what we call the idea कि escalation normally कब खत्म होते हैं? Escalation normally उस situation में खत्म होंगे जब 2 या कुछ members क्या करेंगे? They will leave the group. या some of the members they will agree. Eventually they will agreed upon something. ठीक है, जो आप कह रहे हो ठीक है, तो आप साइडलाइन हो गए, या अल्टीमेटली यू विल लीव द ग्रुप. तो एस्केलेशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ये प्रोसेस है कि नॉर्मली एस्केलेशन जब पीक पर होगा उसके बाद इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट नीचे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि according to Whitman, there was a study in 1991. We talked about that study in detail in the PPT. Most people, if given the choice, avoid situations that are rife with conflict. So what happens with the conflict situation? कि conflict में normally लोग क्या करते हैं, इस तरह की जो situations हैं उनको avoid करने की कोशिश करते हैं. We always do कि हम चाहते हैं कि किसी तरह का conflict ना हो, तो we are avoiders. We try to avoid conflict, but still conflicts, they are the part of every group life. As you can see, based on this study, Robert Free Bale, what he got to know, group members, they spend 20% of their time making hostile or negative comments, right? यानी टोटल 20% टाइम वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने में लगा देते हैं. तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी हाई एट अ ग्रुप लेवल. एंड the study done by the Wall and Nolan, this study indicated the member of 71 group identified 424 instances of interpersonal irritation. See, the interpersonal irritation, they are not conflict. They are the initial of conflict. ठीक है, आप मान लीजिए किसी से इनिशिएट आप किसी से इरिटेट हो रहे हैं, राइट? आपका कोई फ्रेंड है या ग्रुप का मेंबर है, ही इज इरिटेटिंग यू इन अ वे, वो बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो यू गेट इरिटेटेड. बट इरिटेशन का मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके बीच में. हाँ, इरिटेशन इज अ फर्स्ट स्टेज wherein the conflict may start after some time. So in these cases, in 71 group members,
there has been 424 cases wherein the people they had irritation toward their group members. ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट दिस. जैसे मैंने बताया, मैंने इसको शॉर्ट में आपको कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पोजीशन, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, different type of dilemmas such as social dilemmas, such as public dilemma, ये सारे नोट्स मैंने कवर कराए थे. दैट इज द ओनली रीजन इस पीपीटी में वो नोट्स कवर नहीं है. सीधा मैं एक मॉडल पर आऊंगा विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल विच इज कॉल्ड पर्सनल डिलेमा, प्रिजनर्स डिलेमा मॉडल. So we'll talk about the prisoner dilemma model and what exactly is this prisoner dilemma model. Prisoner dilemma model, anyone? किसने पढ़ा है इसके बारे में? क्या होता है prisoner dilemma model? बताइए. Anyone? हेलो, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन तो है. हाँ जी, किसी ने पढ़ा है prisoner dilemma model? See, the prisoner dilemma model, basically it is a type of dilemma, or obviously the confusion or the trade-off situation wherein the parties they have to decide whether they want to cooperate. It means they want to eliminate the conflict between them, or they want to compete against each other, right? तो ये जो conflict situation है ना, या आप कह सकते हैं confusion state है, कि आपको नहीं पता कि अपने किसी member group के साथ, आपको group member के साथ you want to compete against them or you want to cooperate them. Such situation is called the prisoner dilemma model. This prisoner dilemma model is originally it has come from the economics, and in economics we study this theory which is also called as the game theory. And is in this theory we try to understand कि भाई how prisoners they decide the different alternates, and is it better for them to cooperate with each other, or is it better for them to betray each other. So that is the main fundamental of this prisoner dilemma model, and this model is actually important for your exam purposes also. तो prisoner dilemma model में क्या important है, क्योंकि हमें ये चीज समझ आया कि conflict तो होगा ग्रुप्स में, इसको यू कैन नॉट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, ये जो नोट्स हैं, इन केस इफ यू डोंट हैव सच नोट्स, अच्छा आप में से किसी के पास नोट्स हैं इसके ऊपर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? एक टॉपिक मैंने क्लास में कराया था, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. किसी के पास नोट्स हैं इसके? नो. So the topic was sources of conflict. This is very very important. So in case if you don't have those notes, I will provide them. ये आपको मैं notes provide कर दूंगा इसके. They are very good notes. ठीक है. तो sources of conflicts में ये जब हम बात करते हैं prisoner dilemma model, this model is a very this is one of the part of the notes prisoner dilemma model का, जो मैंने नहीं लिख पाया था इसलिए मैंने इस पीडीएफ में इसको इंक्लूड किया है. तो prisoner dilemma model यानी कि participants, they are the two participants, right, and they have two condition in front of them, whether they should compete, there should be a competition among them, or there should be a cooperation among members. क्या आपस में cooperation करें या compete करें? अगर individually उनसे पूछा जाए, individually, then definitely if they compete the highest, there will be the highest reward for them. आप कंपटीशन मार्केट में करेंगे तो हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलेगा, इंडिविजुअली दोनों से पूछा जाए. लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ ये भी कॉम्पीट करे और ये भी कॉम्पीट करे, तो क्या होगा, जो रिवॉर्ड होगा वो मिनिमम हो जाएगा. तो सिचुएशन क्या है कि अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि इफ मैं अगर कंपटीशन करूं मार्केट में, इफ आई डू कॉम्पीट इन द मार्केट अलोन, आई विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न.
इसी तरह से सेकंड पर्सन इज आल्सो सेइंग कि इफ आई डू कंपटीशन इन द मार्केट अलोन आई विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न, बट अगर दोनों ही कंपटीशन करने लग जाएंगे द मैक्सिमम रिटर्न विल टर्न इनटू द लीस्ट रिटर्न। तो इसका मतलब समझ आया कि आपको सिर्फ अपना मैक्सिमम रिटर्न नहीं देखना है, यू विल हैव टू लुक इनटू कि अगर दोनों ही कॉम्पीट करेंगे देन डेफिनेटली ओवरऑल रिटर्न विल बी लेसर इन द मार्केट और दोनों ही पार्टीज को नुकसान होगा। इसलिए द प्रिजनर डिलेमा मॉडल इट सजेस्ट कि देयर शुड बी मोर एंड मोर कोऑपरेशन। अगर दोनों कोऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट नॉट हाईएस्ट बट मॉडरेट लेवल ऑफ रिटर्न, जो टोटल मिलाकर हाईएस्ट होगा। इन टोटल दैट विल बी द हाईएस्ट। दैट इज कॉल्ड द प्रिजनर डिलेमा मॉडल। तो प्रिजनर डिलेमा मॉडल यही समझाता है कि द पीपल दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट दे शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड दे शुड कोऑपरेट, ये मतलब है इसका। नाउ लुक एट दिस, some cooperate and some compete, but the proportion of cooperator to competitor varies depending on the relationship between members, their expectations and personalities, and a variety of other factors. Definitely कितने लोग आपस में कॉपरेशन करेंगे, कितने कंपटीशन करेंगे, वो डिपेंड करता है दोनों लोगों की पर्सनालिटी पर। कुछ लोग हो सकते हैं दे कैन बी द प्रो सोशल, प्रो सेल्फ सॉरी, एंड दे कैन बी अदर विच आर प्रो सोशल। तो दो लोग हैं जिसमें से एक प्रो सेल्फ है, सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखता है, एंड अदर वन जो बाकी लोगों के भी बेनिफिट्स देखता है। ऑब्वियसली द मिस्टर वाई ही विल डेफिनेटली वांट कि कोऑपरेशन किया जाए, बट मिस्टर एक्स हो सकता है ही वांट्स मोर एंड मोर कंपटीशन बिकॉज ही वांट्स हिज ओन बेनिफिट। तो किस तरह का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा वो डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दे शेयर। ठीक है, इफ पीपल नो दे विल बी प्लेइंग मल्टीपल ट्रायल अगेंस्ट द सेम पर्सन देन कॉपरेशन इंक्रीजेस। क्या मतलब है, एक स्टडी का पार्ट है, इसकी समरी वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है। There was a study conducted on the basis of personal prisoner dilemma model। इसमें एक स्टडी की गई और लोगों को बैठाया गया साथ में, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को। फॉर एग्जाम्पल दे आर सिटिंग एंड दे आर प्लेइंग द सेम गेम अगेन एंड अगेन। इट मीन्स इज अ मल्टीपल ट्रायल। ठीक है, बार बार ट्रायल हुआ जिसमें इनको ये डिसाइड करना था कि क्या उनको कोऑपरेट करना है या उनको कंपटीशन करना है। तो स्टडी का रिजल्ट था कि अगर आप सेम लोगों के साथ बार बार ट्रायल करेंगे देन डेफिनेटली द पीपल दे विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन, इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर फाइंडिंग कि अगर आपका कॉम्पोनेंट बार बार आपके कॉम्पोनेंट सेम है, सॉरी आपका ओपोनेंट, if the opponent are same then definitely cooperation will increase and competition will decrease. Okay, so that is one of the finding of this study. Now look at this, people played PDG in the large group of 32. PDG is the prisoner dilemma game, group of 30 to 50 other people. The game randomly paired together on each trial, but the odds of being paired with the same person repeatedly were varied experimentally from low to high। यानी क्या हुआ, 30 से 50 लोगों के बीच में गेम खेला गया और कुछ केसेस में the opponents, Mr. X and Y for example, the opponents they were same। So what happened when the opponents they were same, right? The greater the chances of playing with a person in the future, the more cooperative player become। यानी जिसके साथ आप ज्यादा बार खेलेंगे उसके साथ आपका कोऑपरेशन ज्यादा होगा डेफिनेटली। When played for several rounds, people's action in the PDG also profoundly influenced by the partner choice, right? यानी सामने वाला क्या कर रहा है, right? Those who encounter competitor, however, soon adopt this strategy and they too begin to compete। मान लीजिए आप तो कोऑपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोऑपरेशन से काम करें, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन सामने वाले का नेचर है कि कंपटीशन करना। तो क्या होगा, ओवर द टाइम आप भी क्या करेंगे, ओवर द टाइम यू वुड चेंज योर स्ट्रेटजी एंड यू वुड स्टार्ट कॉम्पिटिंग। So that is one of the finding of this study। If one group member criticize the idea, opinion or characteristics of another, the victim of the attack will feel justified in counter attacking unless some situational factor legitimize the aggression of the former। So basically it has demonstrated कि अगर आपस में लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के आइडिया को क्वेश्चन करते हैं, देन डेफिनेटली उस केसेस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट विल इंक्रीज।
दो तरह की रेसिप्रोसिटी होती है, वी कॉल देम रेसिप्रोसिटी, इसको मैंने अपनी पीपीटी में बताया है। वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी एंड वन अनदर वन इज कॉल्ड द नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी इज समथिंग व्हेन यू सी समवन इज कोऑपरेटिंग देन यू वुड आल्सो कोऑपरेट, दैट इज रेसिप्रोकल। जो सामने वाला कर रहा है वो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी। बट नेगेटिव समथिंग, समवन इज कॉम्पिटिंग then you don't start competing, that is called the negative reciprocity. So that is study demonstrated कि negative reciprocity is highest, आप नेगेटिव चीजों पर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव चीजों पर। अगर आपको पता लगे कि आपके ऊपर कोई पर्सनल रिमार्क कर रहा है, आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप यू वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, यू वुड बी मोर स्ट्रांगली कम आउट एंड यू विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, ठीक है। लेकिन आपको कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, समवन इज एप्रिशिएटिंग, so you would be humble, but at the same time you will be humble and you will also show some you will also show positive attitude toward that person, but वो उतना strong नहीं होगा जितना आपने negative reciprocity यानी negative comments पर react किया। that is one of the finding of this study, same study, right? तो यहाँ से पता लगा prisoner dilemma model, what does it suggest? It mainly suggests the people they should not compete, instead they should cooperate with each other, right? And next is which is called the social value orientation. What is called the social value orientation? ये क्या होता है? Social value orientation is something, what is your degree of concern for your outcome? आप अपने आउटकम के लिए कितना कंसर्न है, own outcome, and how much concerned you are for other outcome. On the basis of this, the social value orientation is created. ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? We are studying this social value orientation because obviously we want to know कि किन सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा, किन सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीज होगा, राइट? तो डिग्री ऑफ कंसर्न फॉर अदर पीपल आउटकम्स रिलेटिव टू ओन्स आउटकम डिटरमाइन अ पर्सन सोशल वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है। आपको अपने बेनिफिट की कितनी फिगर है, आप अपने पॉजिटिव आउटकम के लिए कितना ऑब्सेस है, कंपेयर टू दूसरों के बेनिफिट के लिए आप कितना ऑब्सेस हैं या फोकस्ड हैं, उसको बताता है। we call it the social value orientation, right? Now look at this social value orientation. Many people seek to maximize their gains when they play the PDG. They want to earn as many as point. They are said to be pro self, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा? We will call them pro self. तो SVO ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल वैल्यू ओरिएंटेशन आपको समझना है। We are talking about the pro self. pro self कौन लोग होते हैं? जिनको अपना बेनिफिट करना है, ठीक है। They are self obsessed, they just want to increase their own gain, but at the same time वो दूसरों का नुकसान भी नहीं करना चाहते, ये इंपॉर्टेंट है। They are pro self, they want to increase or maximize their own benefit, but they at the same time they are not concerned about other benefit and losses. But some people are also concerned with other gains and losses, कुछ ऐसे भी लोग होंगे। These pro-social wants or wishes to maximize everyone outcome. Individualistic and competitive SOV are pro-self, and cooperative and illustrative SOV are pro-social. Right? यानी आप ऐसे लोगों में से जो अपना भी बेनिफिट चाहेंगे, दूसरों का भी बेनिफिट चाहेंगे, दूसरों का लॉसेस भी नहीं चाहेंगे और अपना भी बेनिफिट और दूसरों का बेनिफिट भी चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड द प्रो-सोशल। प्रो-सेल्फ एंड प्रो-सोशल नेचर हो सकता है अलग अलग। दूसरे नेचर हो सकते हैं विच इज कॉल्ड द इंडिविजुअलिस्टिक, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव नेचर। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? You will always want your maximum gain but at the expense of other. आपको अपना बेनिफिट तो मैक्सिमम करना है, पर दूसरों का नुकसान भी करना है। आपकी इस तरह की थिंकिंग हो सकती है, you want to maximize your own benefit but at the same time you want to maximize your benefit but at the expense of others. That is called the competitive self. Another one is altruistic. Altruistic is something जो अपने बेनिफिट को सेक्रीफाई कर सकते हैं। दे कैन सेक्रीफाई देयर ओन गेन
एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरों के गेन के लिए अपने गेन को सेक्रीफाई कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, ऑल्दो ऑब्वियसली फाइंडिंग्स में पता लगा कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, या तो प्रो सोशल होंगे पूरी तरह से, या दे विल बी प्रो सेल्फ और कॉम्पिटिटिव, बट देयर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दे विल बी एल्ट्रुइस्टिक। ऐसे लोग डेफिनेटली द पीपल दे विल टेक मोर एंड मोर एडवांटेज ऑफ देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और अल्टीमेटली दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो individual with competitive SVOs are more likely to find themselves in the conflicts। ऐसे लोग जो जिनका नेचर कैसा है, कॉम्पिटेटिव एसवीओ, उनका जो सोशल ओरिएंटेशन कैसा है, कॉम्पिटेटिव, दे वांट देयर ओन बेनिफिट बट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, वो हमेशा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं क्योंकि उनकी बाकी लोगों से बनती नहीं है, वो दूसरों का नुकसान कराएंगे, राइट। कॉम्पिटिटर्स rarely modify their behavior in response to these complaints because they are relatively unconcerned with maintaining smooth and interpersonal relation। तो जब हम स्टीव जॉब्स वाला केस देख रहे थे तो हुआ क्या था, सेम चीज हुई थी स्टीव जॉब्स एंड जॉन स्कली के केस में। we did the case study in the class। so what happened in the John Scully and Steve Jobs case, they both had the competitive SVO, दोनों का competitive SVO, दोनों ही चाहते थे, दे वांटेड टू मैक्सिमाइज देयर गेन बट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो हुआ कि अल्टीमेटली इनमें से एक को कंपनी से बाहर कर दिया गया। जॉन स्कली रिमेन्ड इन द कंपनीज बोर्ड एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी एंड अल्टीमेटली स्टीव जॉब ही लेफ्ट द कंपनीज इन 1985, राइट। तो बेसिकली इस केसेस में क्या हुआ कि जो नेगेटिव या कॉम्पिटिटिव एसयूएस वाले हैं, दे नॉर्मली डू नॉट कंसर्न व्हाट अदर आर थिंकिंग अबाउट देम, राइट। When two competitors meet, the result is an intense conflict. As we have already seen in the case of Apple, where the competitor lose, they often withdraw from the group altogether। ये केस किसका मैं बता रहा हूँ, स्टीव जॉब्स का। They both were competitor and they had the competitor SVO approach, which is the social value approach orientation। So Steve Jobs, when he find the board of directors, they are not supporting him, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव जॉब्स को सपोर्ट नहीं किया। तो अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ अग्रीइंग अपॉन व्हाट जॉन स्कली वांटेड टू अप्रोच इन द कंपनी, ही लेफ्ट द कंपनी, राइट। तो नॉर्मली अगर कोई नेगेटिव एसवीओ या कॉम्पिटिटिव एसवीओ वाला पर्सन है एंड ही मीट्स द अदर पर्सन एंड द पर्सन हैज आल्सो कॉम्पिटिटिव एसवीओ, देन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटेंस होगा। ठीक है, तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे इस केस को अच्छे से। Yes, sir. Now, तो these SVOs एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा SVOs दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, दे आर नथिंग बट द सोशल वैल्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, आपका अपने बेनिफिट के लिए और दूसरे के बेनिफिट के लिए क्या ओरिएंटेशन है, दे आर नथिंग बट द ऑल SVOs। ठीक है, now next chapter is called the conflict resolution। now we will talk about the conflict resolution which is the chapter number 4 कि कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज और सबड्यू सच कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हम बात करेंगे। now अच्छा, shall we take 5 minute break, we will proceed then। 5 मिनट का ब्रेक लें। Yes, sir. ठीक, ओके।
स्टार्ट करें. हेलो, ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Okay, we are now going to start with chapter number 4, which is a conflict resolution. What does it mean by this conflict resolution? Conflict resolution, as I have already told you, conflict resolution is a process, and normally it is called the natural process. Natural process. And this natural process is always followed by conflict escalations. ठीक है? तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद देयर विल बी सम time wherein the member they would decide that the conflict should be subdued. कैसे होगा? नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होने के अलग अलग बेसिस हैं. Sometime if there will be the people they have the competitive SPO, जैसे मैंने बताया था कि अगर ऐसे लोग जिनका competitive SPO है, then definitely उनमें से एक या दो they will left organization, and when they will leave organization at the time, right, there will be some subsetting or readjustment will happen in the group, and that will be the conflict resolution process. So conflict resolution is very important. Sometimes it is natural, and most of the time it is done by the members of the group in a different ways. So we will talk about what are the different ways the conflict can be subdued. In one way or another way, conflict subside even when members are committed to their own viewpoints. High level of tension cannot be maintained indefinitely. ऑब्वियस है, अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में भी आपका झगड़ा आपके फ्रेंड से होता है, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट होती है, या कुछ दिनों के बाद फिर बातें बंद हो जाती हैं, तो देयर विल बी अ टाइम, obviously not in every cases, but in most of the cases you will start talking each other, and you would admit some of your mistake, and your friend will definitely admit some of his mistake, and over the time the conflict will be subside in any of personal setting or in organizational setting. The group may fissure, splitting into two or more subgroup whose member are more compatible. So that can also happen. जैसे मैंने बताया था कि what can happen in a group. One of the possible outcome of any conflict can be the group may disarray. Disarray means the group may be broken down into pieces, or group may dissolve. And in some cases, the group may be splitting or may be divided in the different types of subgroupings, right? So that is also one of the conclusion of group conflict resolution, कि जब conflict होने के बाद या तो group पूरी तरह से बंद हो गया या groups divided हो गया into the subgroup. That is also one of the possibility. One member may leave the group as was a result in the job escalate dispute. In time, group hostility abates. So as I told you, that is also one of the solution of the conflict resolution कि कई बार कुछ लोग ग्रुप से चले जाएंगे, ठीक है, जो हमने जॉन स्कली केस स्टडी में हमने पढ़ा था, ठीक है. तो 1985 he left, Steve Jobs left Apple. ठीक है. Now, what are the different types? What are the different stages of group conflict resolution? So one by one, we will discuss each and everything. The first one is called the commitment to negotiation. The commitment to negotiation is the first one, right? Conflict escalates when group member become firmly committed to a position and will not budge. Commitment to negotiation is what? Commitment is a conflict. आप बोलेंगे सर commitment is a positive word. No, commitment not is a positive word. Commitment mean that you are committed to your point of view. You don't want to listen other, right? You don't want to change your position, right? You are rigid, you are adamant. So that is called the commitment. तो अगर कमिटमेंट की बात करते हैं तो जो जब ग्रुप इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो द वेरी फर्स्ट स्टेज इज कमिटमेंट. तो कमिटमेंट मींस कमिटमेंट टुवर्ड योर views. You become more and more rigid. You don't want to change your opinion. You don't want to listen other. तो अगर commitment situation है तो commitment to negotiation, it means resolution can happen when you start negotiation with the other members, right? Conflict escalates when group member firmly committed to a position and will not budge, as I told you. While conflict de-escalate when group members are willing to negotiate with others
to reach a solution that benefit all parties. क्या होगा अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, तो कमिटमेंट के बाद पीपल दे विल रियलाइज क्योंकि वी द नेगोशिएशन इज द ओनली वे, राइट? तो वी शुड नेगोशिएट. तो नेगोशिएशन इज द वन वे जिसमें पार्टीज क्या होंगी, ऑल द पार्टीज दे विल गेट बेनिफिटेड. Negotiation is what? Negotiation is a reciprocal communication process whereby two or more parties to a dispute examine specific issues, they look into it, they explain their position, they exchange offers and counter offers. That is called the negotiation. They will understand the other problems, they will understand their position also, they will make counter offer, they will accept the offer, they may also recounter. That is called the negotiation process. ठीक है? अब नेगोशिएशन भी अलग अलग तरह की हो सकती है. इसको मैंने पीपीटी में एक टेबल के थ्रू समझाया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन. सो हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द क्विक रिव्यू ऑफ दोस टाइप ऑफ नेगोशिएशन वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन. डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? इट मींस every party is equally participated of such negotiation. Not only one party is making negotiation, but evenly all parties of such a negotiation, they are making negotiation, right? So herein both parties, they retain their competitive orientation and take turns making small concessions until some equally dissatisfying middle ground is reached. What does it mean? यहाँ पे दोनों parties क्या करती हैं, छोटे छोटे compromises करती हैं. जैसे मैंने कहा, sorry, they start making small compromises and small concessions. Sorry. For example, there is a project and the project cost is, for example, 150 CR and anything. We can take any amount. So this party is a buyer and this party is a seller. Then definitely the seller will try to reduce it down. Again, obviously he will always try to increase it and the buyer will always try to reduce it. So if they do so, okay, okay, I cannot give you more than 149 or 148. He says, okay, no, but okay, let's make it 149. So that's how they are making offers. So here they are making the small compromises and small concession. So such type of negotiation is called the distributed negotiation. आप कहेंगे सर नेगोशिएशन तो ऐसे ही होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं. नहीं, नेगोशिएशन अलग भी हो सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल द सॉफ्ट बार्गेन्स और यू कैन से द सॉफ्ट नेगोशिएशन. सॉफ्ट नेगोशिएशन इस एग्जांपल में क्या होगा? फॉर एग्जांपल द बायर इज प्लेइंग द सॉफ्ट नेगोशिएशन टैक्टिक. सॉफ्ट नेगोशिएशन कर रहा है बायर, ठीक है, बट द सेलर इज not into soft negotiation. Buyer is saying, okay, earlier he said I'll give you 145. Now he's saying अच्छा 145 नहीं 146 दे दूंगा, ठीक है 148 दे दूंगा. But he is seller is denying it. बार बार seller deny कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है. वो कोई he is not even making any counter offer. And he when he said okay 149, he may say okay 149 पे deal done. So here, which party is making the soft bargains? Soft bargain is the one, the buyer is making the soft bargains. Okay, he is the soft bargainers. Okay, so that can also happen. The soft bargainer, they see negotiation as too close to competition, so they choose a gentle style of negotiation. That is a gentle style, right? You are increasing price. You are the only one who is making compromising and anything, right? Not the seller. Okay, so it is something that you are trying to done the deal. In such a case, that is called the soft negotiation. Hard bargains, what are the hard bargains? Hard bargains क्या होगा? In the contradictory situation, आप मार्केट में कुछ लेने के लिए जाते हैं. If someone said okay 200 rupees का कुछ है and you said okay नहीं लेना, आप जाने लगते हो, ठीक है. So what does it mean? आपने यहाँ पे कोई bargain भी नहीं किया, but at the same time you are very clear with your commitment कि okay I will not give you 200 anyhow, I'll give you 150 only. सामने वाला कह रहा है ओके ठीक है 170 दे देना, ठीक है, अच्छा ठीक है 160 दे देना. यू आर लाइक यू आर लीविंग द ग्राउंड, या यू आर द वन हु इज लीविंग दिस नेगोशिएशन. व्हाट इज इट? इट्स अ हार्ड टैक्टिक्स. इसको हार्ड टैक्टिक्स कहा जाता है. बोलते हैं ना टेक इट और लीव इट, आपने सुना होगा मीटिंग्स में, या यू हैव सीन समवेयर टेक इट और लीव इट, आई डोंट केयर. व्हाट डज इट मीन? इट्स अ हार्ड नेगोशिएशन. ठीक है, यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस. तो
नेगोशिएशन के अलग अलग वेज हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू. When negotiators bargain over position, they tend to lock themselves into those positions. Sometimes what happens कि negotiation fail क्यों होते हैं, right? इसके ऊपर अगर हम आए तो negotiation में आपकी position lock कर लेते हो आप. Position lock करने का मतलब क्या होता है कि दोनों ही पार्टी क्या करती हैं, they start defending their positions कि okay, I can't give you more than 145 because so what you're doing, you're justifying. ठीक है, I cannot get lesser than 145 because. तो बच्चे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों पार्टीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू लॉक देयर पोजीशन. दे हैव मोर एंड मोर दे आर क्लैरिफाइंग देयर पोजीशन. देखो क्या होता है जब आप रीजनिंग करने लगते हो, रीजनिंग करने का मतलब आप बार बार रीजन देने लगते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू ट्राइंग टू फाइंड अ कैब एंड द कैब इज आस्किंग 200 रुपीज. यू आर लाइक 200 तो किसी चीज के नहीं होंगे, ठीक है. आई एम अ डेली गोअर, आई पे ओनली 150 रुपीज, आई कैन नॉट गिव यू दैट. ठीक है, मैं रोज इतने बजे निकलता हूँ. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिफेंडिंग योर पोजीशन दैट यू कैन नॉट पे मोर देन 150 रुपीज. ऑन द अदर हैंड द सेलर और आई मीन द कैब ड्राइवर, ही कैन से मैम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए हैं. ठीक है, नहीं भी बढ़े होंगे, डेफिनेटली ही विल हैव हिज पॉइंट्स. ठीक है, तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुके हैं, गर्मी इतनी हो रही है, एसी चलाना पड़ेगा तो मेरी कॉस्ट आएगी. he is also defending his position to get rupees 200 rupees. तो ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या होता है, इस तरह के नेगोशिएशन कई बार फेल हो जाते हैं. ठीक है, या एक पार्टी को ज्यादा एडवांटेज होता है, दूसरी पार्टी को कम एडवांटेज होता है. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि नेगोशिएशन के टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन एंड व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम इन नेगोशिएशन. आई बिलीव आपको समझ आया होगा. द फर्स्ट प्रोसेस इज कमिटमेंट टू नेगोशिएशन. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes or no? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now, misperception to understanding. Misperception to understanding. See, the misperception again, it's a conflict spiral situation. By misperception, what does it mean? Misperception is when you have a misconception about someone. When you think that the person is going to compete you, but it can be opposite. The person wants to cooperate with you. So that is a misperception. So misperception से अंडरस्टैंडिंग पर आना इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट वन, ग्रुप मेंबर्स often assume that others are competing with them when in fact those other people only wish to cooperate, right? So that is one of the misunderstanding or the misperception about each other, that you may have one of your assumption that the other wants to compete with you. Sometimes it happens even in your friend group also, when you see someone and you may have the misconception. Relatives के केस में आपने देखा होगा, that is very common in Indian families, कि हमें एक दूसरी फैमिलीज या रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं उनको लेकर मिसकंसेप्शंस होते हैं. हम मानते हैं कि वो शो ऑफ करते हैं, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाते हैं, बट हो सकता है दैट द रिवर्स कैन बी ऑपोजिट. हो सकता है उनके माइंड में ये परसेप्शन हो कि आप उनको नीचा दिखाते हैं या आप शो ऑफ करते हैं. तो दैट इज द मिसपरसेप्शन. ऑब्वियसली हाउ वी कैन डील विद दिस मिसपरसेप्शन पॉइंट, यहाँ पर है मेंशन. Members do not trust other people because they are convinced that the other motives are selfish one, right? तो sometime if you ask कि अगर कोई प्रॉब्लम है दो लोगों के बीच में, why don't you communicate, है ना? आप फ्रेंड्स ग्रुप में दैट इज आल्सो वेरी कॉमन कि आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे. मिस्टर एक्स एंड वाई, इफ दे हैव सम इश्यूज, देन द प्रॉब्लम, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द थर्ड पर्सन, इफ ही और शी इज आस्क कि भाई आप आपस में बात क्यों नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं मिस्टर X will have his own justification and Mr. Y will also have his justification कि अगर मैं बात करूंगा Y will not agree, and X says अगर मैं बात करूंगा X will not agree, right? What does it mean? It is a misperceptions, ठीक है, but they both want to do it, they both want to resolve it, they both want to solve it, but कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या हुआ, इन्होंने अपना एक प्री कंसीव नोशन बना लिया एक दूसरे के लिए कि दोनों के मोटिव सेल्फिश है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है. Now, group members must undo these perceptual misunderstanding by actively communicating. That is the main idea. कि आप इन misperception को कैसे कम कर सकते हैं, miscommunication को कैसे कम कर सकते हैं? By starting communication, right? Communication is always a good idea. ठीक है? तो through effective communication, the members they can eliminate such misperception
things. Communication can be beneficial. However, if interactors use it to create cooperative norm, if it increases trust among participants. See, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि communication is only benefit in case if they want to increase the confidence, if they want to increase cooperation. But communication उल्टा भी तो हो सकता है. If they start abusing, if they start uh, talking a negative thing about each other, definitely the problem will escalate. So communication only beneficial when it has positive purposes such as increasing cooperation. So that is the second point, which is from misperception to understanding. Now, third one, hard tactics to cooperative tactics. From hard tactics to cooperative tactics, it is also more or less same as negotiation part, but the tactics, they are specific actions. Negotiations का part ही tactics है, but they are specific actions. Specific actions. देखो इसका मतलब क्या हुआ? For example, okay. So what happens if I just tell you hard tactics क्या हो सकते हैं? Hard tactics, for example, you want someone, right? You want to discuss some issues with Mr. X, but you insist him to come to your place only, your home place, right? Your place only. Mr. Y is deliberately opting for his own place. The reason is because obviously he knows in his own place he'll be more comfortable and he'll be more dominated compared to Mr. X. Mr. X may also want it कि okay, जो मीटिंग होगी मेरे घर पर ही होगी, आपके घर पे नहीं होगी, मेरे घर पर होगी. Why he wants so? Because obviously he also wants some these type of specific action to manipulate or at least to burden him with some of the actions, right? So that is the one of the reason the hard tactics. They are the type of the hard tactics. आपने environment ऐसा चुना जिसमें एक person comfortable नहीं है. But what can be the cooperative tactics here? The cooperative tactics, okay, the place should be neutral. Place should be neutral. ठीक है? कोई it can be a restaurant, it can be a hotel, it can be a workplace, right? जहाँ पे दोनों के लिए एक neutral place हो. So basically, when we talk about the hard tactics and the cooperative tactics, hard tactics obviously they escalate problems. Cooperative tactics they decrease or they eliminate those problems. So group member they cope with conflict in different ways. Some ignore the problem. People they have different types of they have different ways, right? तो आपने देखा होगा even in families what people do. अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो what happens normally? It is a nature. It can be the very manipulating nature, but at the same time, it can be cooperative nature also. For example, Mr. X and Y, they are good friends, but they have some problem. Mr. X always adopt the silent approach. Silent approach. Okay, I'm not going to pick up his call. I'm not going to talk to him. I'm going to gaslight him. Gaslighting आपने सुना होगा. It's a very negative way, negative word. गैस स्लाइडिंग का मतलब पूरी तरह से कम्युनिकेशन कट डाउन कर देना. ठीक है, आपने मिस्टर एक्स से सारी तरह से कम्युनिकेशन कट डाउन कर दिया. यू डोंट वांट टू टॉक टू हिम, राइट? व्हाई यू डूइंग सो? देयर इज वन वे दैट इट इज योर हार्ट tactics. You want make him to realize that he has done something or you want to manipulate him. That can also be possible. Mr. X may also have a cooperative tactics. Okay, if you have any problem, we'll meet and we will try to solve this problem. तो दोनों के लिए देखो अलग अलग तरीका दोनों ने अप्रोच किया कि एक पर्सन ही वांट्स टू टॉक ओवर इशू बट द अदर पर्सन ही डोंट वांट टू टॉक ओवर इशू. ही वांट टू इग्नोर द प्रॉब्लम एंड एट द सेम टाइम ही वांट टू मैनिपुलेट द अदर वन, व्हिच वी कॉल द गैस स्लाइडिंग. गैस स्लाइडिंग आपने सुना होगा आई बिलीव. गैस स्लाइडिंग, एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट द गैस स्लाइडिंग? सुना है किसी ने इसके बारे में? यस और नो? No. ओके, सो गेस्ट स्लाइडिंग इज समथिंग आपने अपने पर्सनल रिलेशंस में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली में भी इसको ऑब्जर्व किया होगा. तो गेस्ट स्लाइडिंग इज समथिंग व्हेन यू टोटली कट डाउन कम्युनिकेशन विद समवन एंड ट्राई टू मैनिपुलेट देम, राइट? मान लीजिए आप किसी से बात करना बंद कर दें. आपको पता है कि अगर मैं बात करना बंद कर दूं इस सामने वाले बंदे से तो डेफिनेटली ही विल सरेंडर
and he will apologize. Even he did not make his mistakes, but he will definitely apologize. ठीक है? That is called the gaslighting. यानी आप दूसरे के behavior को manipulate कर रहे हैं with silent and total cut down approach. ठीक है? That is called gaslighting. So we call it hard tactics. And if we want Mr. X to cooperate, then we will call it a soft or cooperative tactics, right? So some of these tactics escalate conflicts, as I told you. कुछ cases में conflicts को increase करती हैं, जैसे hard tactics. हो सकता है कुछ time के लिए conflict ठीक हो जाए, but over the time वो beneficial नहीं होगा उस relation के लिए, right? या उस particular group के लिए. But others are reliably associated with reduced hostility, right? Now, there's a model which is called the dual consent model. The dual consent model is very important for exam purpose also. The dual consent model. What does it mean by the dual consent model? Dual consent model, I have also explained this dual consent model here so that we can understand what is this dual consent model. This model is a conceptual perspective on methods of dealing with conflict. It means it talks about how you deal with a problem or how you deal with a conflict. Assumes avoiding, either you avoid it, you yield, you surrender, you fight, or you cooperate. What can be the different types of strategies you use in order to deal with the problem? कुछ लोग क्या करते हैं, avoid करते हैं, होते ना, they don't want to talk about problem. When you try to explain, when you try to ask them कि we should work on it, they what they do, they avoid. कहते हैं ना कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी. Some they surrender कि ठीक है, मेरी गलती मैं मानता हूँ, ठीक है, I apologize. There is someone they fight extensively, and fighting is something can also be called manipulation. They can also manipulate other through gaslighting. Another one can be the cooperative behavior. Okay, they will talk, they will meet, they will talk. How big the differences are, they will definitely talk about it and they will try to resolve the problem. That is called the cooperative. ठीक है? ये चारों solutions या चारों strategies depend करती हैं कि आपके nature क्या है. What are your nature? That is depend upon your SVOs. आपको याद होगा, social value orientation. Whether you are pro self or you are pro social, उसके बेस पर डिसाइड होगा कि किस तरह का आपकी डीलिंग होगी in order to understand or in order to solve the problem, right? So you can see this. Experts suggest that avoidance, fighting and yielding are only temporary solution. किसी चीज को अवॉइड कर देना, उसके ऊपर फाइट कर लेना है, सरेंडर कर लेना, right? Obviously they are the temporary solution, but they quell conflict at the surface without considering the sources. What does it mean? किसी चीज के ऊपर बात ना करना, वो कुछ टेम्परेरी आपको रिलीफ देगा, बट डेफिनेटली वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फाइटिंग इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड आइडिया टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यील्डिंग इज ऑल्सो नॉट गुड आइडिया, क्योंकि यील्डिंग में क्या हो रहा है, वन पर्सन is compromising, one person is surrendering, one person is asking for apologies, that is the yielding. That is also not good. एक person का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक person का the other person is taking advantage or the other person is taking for granted, right? They are the temporary solution. Avoiding and fighting are generally considered to be negative methods. Avoiding and fighting, पूरी तरह से बात को avoid कर दो या fight करो तो negative है, as they tend to intensify conflict as they are viewed as more disagreeable. फाइट करना, अवॉइड करना, इनसे कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज ही होता है. The more positive are pro-social method, which is yielding and cooperation. Even yielding is also considered good, but obviously in the long run, it is not good. आप एक दो बार माफी मांग लो किसी से, अगर आपकी कोई गलती हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, इवन आपकी गलती ना हो, sometimes the people, if they have the pro-social approach, they apologize, even they are not at fault. बट लॉन्ग रन तक नहीं चल सकता ना, लॉन्ग रन में डेफिनेटली वो बैकफायर करेगा कभी ना कभी. These tactics they mitigate conflict and are viewed as more agreeable. They are more likely to involve more of the member in the solution and hence they tend to increase unity. But yielding के साथ सब्जेक्ट ये है, कंडीशन ये है कि लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं है. शॉर्ट रन में इट कैन बी इफेक्टिव. शॉर्ट रन में किसी से माफी मांग लेना इज इफेक्टिव, बट एक ही पर्सन अगर बार बार माफी मांगे जाए, बार बार उस प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबल माने, then definitely in long run it will backfire. ठीक है? So we will see this diagram. Now look at this. I hope ये diagram visible है आपको.
Visible? Good. Now look at this. See, yielding. Yielding is what? Yielding happens when there is a high concern for other outcomes. जब आपको दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता है. For example, if there are two friends, they are in relation. ठीक है, they are friends. And Mr. Y, Mr. X is the one who yields more often. It means yielding matlab surrender. Why is he doing so? Because he wants to have good relation with Mr. Y. So what he is doing? He is compromising his own benefit at the expenses of, sorry, he's trying to compromise with own benefit at the expense of the relationship, right? Making compromising. तो वो कब होगा? जब आपको बाकी लोगों के आउटकम पे ज्यादा कंसर्न है. इट मींस यू आर प्रो सोशल, लेकिन अपने कंसर्न को लेकर या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आपको कम, you are less oriented, or you are less focused or concerned for your own outcome. Only then you will yield. Okay. Cooperation is when cooperation is most positive or most desirable outcome. Why? Cooperation कब करते हैं? जब बोलते हैं ना लोग कि आपस में बैठ के बात करते हैं, जिसकी भी गलती होगी या उस सिचुएशन को डील करेंगे, right? So it is very common in real life, in the personal relationship, even in the offices. If the people, if they talk to each other, if they explain the problem they are facing, or if they are not comfortable with a certain problem, they communicate and they listen to each other very carefully, and they try to mitigate those concerns, and they want to assure each other. Obviously, why do you want to do? क्योंकि आपको अपने लिए कंसर्न भी हाई है तो दूसरे का कंसर्न भी हाई है. आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं. हाँ, इसी कॉन्वर्जेशन में इफ दे स्टार्ट ब्लेमिंग, इफ वन पार्टी इज ब्लेमिंग वन अनदर, बार बार ब्लेम कर रही है, देन अगेन ये अपने आप ही मैनिपुलेशन होगा. But if they are talking democratically, they are talking and they are resolving and to want to resolve problem, then it will be a cooperating approach, जिसमें दोनों ही कंसर्न हाईएस्ट होंगे. फाइटिंग फाइटिंग कब होगी? फाइटिंग जब आपका अपना कंसर्न हाईएस्ट होगा, तभी तो आप ब्लेम करते हो ना एक दूसरे को. इन अ सिचुएशन जो जॉन स्कली के केस में हुआ, राइट, जॉन एंड स्टीव के केस में हुआ, दे वर ब्लेमिंग ईच अदर because they wanted their orientation and their approach toward company, how company will function is good, but the other approach is not good. तो यहाँ पे क्या है, आपको बाकी का कंसर्न नहीं है कि बाकी लोगों को क्या बेनिफिट होगा, आपको कंसर्न है सिर्फ अपने बेनिफिट से. देन डेफिनेटली द फाइटिंग विल हैपन. अवॉइडिंग अवॉइडिंग इज समथिंग व्हाट? अवॉइडिंग कब होती है? जब आपको अपने लिए भी कंसर्न नहीं है, दूसरे के लिए भी कंसर्न नहीं है. That's the least beneficial. You try to avoid situation. ठीक है, मान लीजिए someone is asking you कि okay, let's talk about this issue. जो भी हमारे बीच में इशू हुआ, हमारे ग्रुप में जो इशू हुआ, let's talk about it. ठीक है, it means सामने वाला has highest concern for his own and your concern, but you're not calling him. You're not calling him. And if you're calling him, you just ask him कि okay, avoid it. I don't want to talk about it. ठीक है, इसका मतलब है you don't want to resolve the problem. It means you have lower concern for your outcome and for the other outcome. So that is called the dual consent model. Dual consent model obviously depend करेगा कि आप cooperate करेंगे या आप surrender करेंगे, avoid करेंगे या fight करेंगे. वो depend करेगा कि आपका खुद का approach क्या है. What is your approach? Whether you are pro-social or pro-self, या फिर सामने वाले का अप्रोच क्या है, whether he is pro self or pro social, right? So this dual consent model is very important for exam also. Please prepare it. Okay. Now, upward to downward conflict spiral. What is mean by this upward to downward conflict spiral? Just give me a minute, huh?
Okay, sorry, I got a very important call. That's why I just moved the class. Anyways, okay, यहाँ तक clear है आप सबको बच्चे? Is it clear? Dual consent model. Yes, sir. Now, the upward to downward conflict spiral. See, the upward to downward conflict spiral, again, it is a situation. Upward conflict spiral means the conflict when it is at peak. Conflict at its peak. The highest level of conflict, right? Downward conflict spiral is something when the conflict is going down. It means the conflict is either succeed or eliminating from a group setting. So consistent cooperation among people over a period generally increases mutual trust. However, when people cannot trust one another, they compete simply to defend their own interest. So basically, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, तो देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन कि अगर लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, the people they don't trust, then definitely they will compete. That is the only option they have in case if they have no trust. So if the people they associate and if they have mutual trust, then definitely they will try to cooperate every time. Now the question is, how can the upward spiral of competition and distrust once initiated be reversed? Then what is the way that we can reverse this situation of upward conflict spiral with downward conflict spiral? So Robert Axelrod in 1984, he was the one who suggested this idea how we can reduce conflict spiral. I mean, how we can reduce conflict situation in an organization. So he had come up with one of the theory, right? Those who cooperate with competitors are viewed as weak, and those who consistently compete are considered unfair. Now there's a dilemma. The Robert Axelrod, he was the one who come up with this idea कि कई बार क्या होता है, although cooperation is a good strategy, cooperation is the best strategy in order to eliminate problem, but sometimes what happens, the people perceived, the people those who are cooperating, they are not raising their voice, they want to settle down matter, they are considered weak, right? उन्हें weak समझा जाता है, और जो सिर्फ हमेशा competition करते हैं, they are considered unfair, right? So what is the middle ground? What should be the middle ground? तो यानी कि competition and always cooperation. I mean, always competition and cooperation, they are not good idea. So what should be done? So Robert Axelrod, in his study, he come up with an idea which is called TFT, tit for tat. This approach was given by Robert Axelrod. He studied dozen of different strategies, ranging from always competing with a competitor to always cooperating with one. The most effective competition reverser to emerge was a strategy called tit for tat. Simple one. कि जो जैसा करे उसके अगेंस्ट आप वैसा करो. सिंपल सी बात है. हाँ, but your orientation should always be cooperation. आप हमेशा माइंड में रखो कि आपको कोऑपरेशन करना है. But at the same time, if someone is not cooperating with you, someone is competing against you, then you should always change your strategy and competing against that person. ठीक है? So he was the one who discovered कि दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है, हमेशा कंपटीशन करना और हमेशा कोऑपरेट करना. ठीक है? तो TFT begins with cooperation, as I told you. If the other party cooperates too, then cooperation continue. Cooperation होना चाहिए, definitely होना चाहिए, but लेकिन अगर बाकी पार्टी आपके साथ compete कर रही है, if someone is not cooperating, then you should also do it, because the effectiveness of TFT as a conflict resolution method is based on its proactivity. Any delay in responding to cooperation reduces the effect. What does it mean? इसको मैं समझाता हूँ. इसका मैंने केस भी क्लास में कराया था, one of the case. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कराऊंगा. Now look at this. For example, this TFT approach, which was given by Robert Axelrod, he said, okay, it should be TFT, right? If someone is competing, you should also competing. That is the main idea. If someone is cooperating, then you should also cooperate without delay. Without delay.
ऐसे नहीं कि आप इसमें टाइम ले रहे हैं. समवन इज कोऑपरेटिंग, यू शुड ऑल्सो कोऑपरेट, ठीक है, विदाउट डिले, बिकॉज देर कैन बी ए प्रॉब्लम ऑफ लेस ऑफ प्रोवोकेबिलिटी, provocability, right? This is the problem. There can be a problem on provocability. It means अगर आप डिले कर दें कॉपरेशन में तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. The other person will only compete with you कि मैंने कॉपरेशन किया बट आपने कॉपरेशन में टाइम लिया, ओके, आई विल ओनली कॉम्पीट अगेंस्ट यू, ठीक है. So in order to eliminate such problem, you should always focus on that you should always be fast, you should always be prompt, you should always take prompt action when someone is cooperating with you. TFT also loses some of its strength in noisy interaction when behavior cannot be clearly classified as either competitive or cooperative. Yes, this is one of the major disadvantage or limitation. TFT कब काम आ सकता है, जब आपको पता हो कि सामने वाले का बिहेवियर कॉम्पिटिटिव है या सामने वाले का बिहेवियर इज समथिंग कोऑपरेटिव. बट व्हाट अबाउट इफ समवन इज रनिंग ए स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट यू. स्मीयर कैंपेन का मतलब क्या होता है, देखो, स्मीयर कैंपेन इज समथिंग अ सिचुएशन जिसमें बच्चे मान लीजिए कोई आपके सामने अच्छा बन रहा है, ठीक है, समवन इज प्रेटेंड टू बी योर गुड फ्रेंड बट एट द सेम टाइम ही इज स्मीयरिंग अगेंस्ट यू. वो आपकी जो बातें हैं, पर्सनल चीजें हैं, आपके बारे में गलत चीजें, चाहे वो ठीक हो नहीं हो, ही इज टेलिंग एवरीवन, राइट? दैट इज कॉल्ड द स्मीयर कैंपेन. If someone is holding a smear campaign against you, then definitely it is very difficult for you to get the idea whether he is friendly, whether he is cooperating or competing against me. तो ऐसे केस में TFT, this tit for tat strategy given by Robert Axelrod, that is not useful. Why? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि either someone is competing against you or cooperating, but world is not such simple, or the real life is not so simple. In many cases, the people they manipulate, they are double fates, right? So this problem of the TFT or this method TFT is only workable when you get the when you have clear idea कि आपसे कौन किस सिचुएशन में कॉम्पीट कर रहा है, कौन किस सिचुएशन में आपसे कॉपरेशन कर रहा है, जो रियल लाइफ में बहुत इजी नहीं है आइडेंटिफाई करना. कोई आपके सामने आपका ग्रुप मेंबर अच्छा बन सकता है, आपके बारे में अच्छी बातें कह सकता है इन योर प्रेजेंस, बट एट द सेम टाइम आपके एब्सेंस में वो आपके अगेंस्ट एक स्मीयर कैंपेन रन कर सकता है. हाउ डू यू रिएक्ट इन सच सिचुएशन? सो दैट इज द लिमिटेशन, TFT का लिमिटेशन, ठीक है. लास्ट, which is the many to few problem. Not last, second last. Many to few, not a problem. Many to few is a conflict resolution part. Many to few means what? इसका सीधा सा मतलब, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मोर एंड मोर पीपल दे आर इन्वॉल्व, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे होगा? when some of the member they will leave such conflict and they will start working on their topic or in their projects, but they are not no longer part of any conflict. तो शुरू शुरू में 10 लोग थे उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा, ठीक है, and out of these 10, 8 were less affected and 2 were mainly affected, ठीक है. तो शुरू में 10 लोग कॉन्फ्लिक्ट में थे, 10 लोग एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे थे, बट होता क्या है, नॉर्मली यही होता है ना, ओवर द टाइम जो 10 लोग आउट ऑफ 10, these 8 they were less affected. तो क्या करेंगे, अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है, छोड़ो यार, कोई बात नहीं, वी आर नॉट दैट अफेक्टेड. एंड ओवर द टाइम ओनली 2 people will be there and they will be in a conflict situation. तो इसका मतलब है जो कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, from 10 to only 2. That is many to few approach, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई व्हेन अदर्स टेक साइड्स. पहले 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे लोग इन्वॉल्व होते गए, 4 ने इधर साइड ले लिया, 4 ने इधर साइड ले लिया, तो व्हाट हैपेंस, फ्रॉम फ्यू टू मैनी, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट स्पाइरल. बट ओवर द टाइम क्या होगा, बाकी 4 लोग बैठ जाएंगे, राइट, कॉन्फ्लिक्ट कम होने लगेगा. But they shrink when third party mediator help group member reach a mutually agreeable situation. कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, आपने देखा होगा, अगर 2 लोगों के बीच में फाइट हो रही है, 2 लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, देयर विल डेफिनेटली 1 or 2 member they will come in between
and they will be the moderator. They will work as a moderator or mediator, right? And they will try to resolve the problem. Okay, so that is a many to few problem. Other uninvolved group member or outsider parties, they can also help. यानी जो members हैं जिनकी फाइट नहीं हुई है, या तो वो उस काम को करेंगे एज अ मीडिएटर, या ग्रुप के जो लोग नहीं है, दूसरे ग्रुप के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, दे विल कम एंड दे विल रेस्क्यू और दे विल ट्राई टू रिजोल्व द प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड द मैनी टू फ्यू अप्रोच. कैसे कर सकते हैं? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ साइड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ व्हाइल कंट्रोलिंग, राइट? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अगर कोई मीडिएटर है, दोनों को शांत कराएगा, नॉर्मली होता है ना, द मीडिएटर he will help and he will help them and he will give the opportunity to both the parties to listen the problems can. So that is one of the way. Improving communication between the disputant by summarizing points, asking for clarification. Right? जब आपकी लड़ाई होती है तो आपके बहुत सारे आइडियाज नहीं पता होते कि आपको प्रॉब्लम क्या है. You start blabbering, you start accusing, you start abusing each other. So mediator can help to shorten those process. He will specifically ask को प्रॉब्लम क्या है, लंबी छोड़ी बात छोड़ो, प्रॉब्लम पे आओ. So he will come down to the summarizing, right? In the same way, he will also expect same from the other person. Formulating and offering proposal for alternate solution that both party find acceptable. तो mediator का काम क्या होगा? Mediator, he will come up with a solution and the solution must be acceptable both the party. That is also done by the mediator. Manipulating aspect of the meeting, including its location, sitting, formality of communication, time constant, attendees and agendas. Okay, mediator ये काम भी करता है. देखो मान लो मीडिएटर को लगता है कि इन दोनों को एक साथ सीट पे बैठाया जाए तो ये दोबारा फाइट करेंगे, राइट? तो ऐसा करते हैं, दोनों को एक साथ सीट पे नहीं बैठाते, दोनों को आमने सामने बैठाते हैं. आई कांटेक्ट अच्छा होगा, एक दूसरे की बात को ज्यादा इफेक्टिवली समझ पाएंगे. तो व्हाट ही डिड, ही मैनिपुलेटेड द सिटिंग प्रोसेस, राइट? एंड ही फील्स कि मीटिंग अगर हम ऑफिस में कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. वी शुड गो सम आउट समवेयर and we should discuss, right? Discuss in a place which is a public place. Public place पे definitely वो लोग आराम से शायद ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं. तो मीडिएटर का काम ये है कि मीडिएटर में help or may start manipulate the entire process in order to help both the party to listen to each other, right? So these are the different types of mediation. One of the type is moot. Moot is something wherein the people they express their opinion, right? The disputant and the mediator openly and informally discuss problem and solution, but the mediator can make no binding decision. That is called moot. आपने सुना होगा डिबेट जो प्रोसेस होती है, we call them moot, right? डिबेट प्रोसेस में यहाँ पे informal conversation है. There is an informal conversation, but the mediator will not make binding decision. दोनों parties को जो सही लगेगा वो करेंगे, but he will not make decision which is legally binding. कोर्ट का काम भी तो यही होता है ना. कोर्ट also does this. दोनों parties की बातों को सुनती है, but कोर्ट के केस में, जुडिशियल केसेस में, it is binding decision. जो भी डिसीजन होगा that will be binding on both the parties. That will be binding. मूट में it is not binding. ये binding नहीं होता, यानी दोनों पार्टी पर ही एप्लीकेबल नहीं हो सकता. वो फ्री होती है, उसको माने या ना माने. ठीक है. Overall, most people prefer arbitration followed by moot, mediation and inquisitorial procedures. What does it mean by inquisitorial procedure? It is nothing but judicial process, right? So moot, mediation, inquisitorial procedures, right? So this is the way that many to few, I mean, how conflict can be subside through less and less number of people they are joining the conflict, and only one or two or a very less number of people they are the part of the conflict. That's how conflict can be subside, right? Now, anger to compose. Anger to compose is the last thing which is a part of this discussion of this chapter, which is the conflict resolution, anger to compose.
right? When the people they are angry, obviously conflict increases. But when they start losing their anger, when they start being more composed, obviously in that situation the conflict is subside. So when temper flares, the group should encourage member to regain control over their emotions. So there should always be one of the person those who always demonstrate what is acceptable behavior and what is not acceptable behavior. And if someone is abusing someone, right? So one of the member, he or she should always tell the dispute member कि क्या acceptable behavior है और क्या acceptable behavior नहीं है. किसी को गाली देना obviously not acceptable behavior. तो कई बार क्या होता है when you do it in a flow, when you abuse someone in a flow, then definitely you may not regain the idea that it is not acceptable or acceptable, right? So it is always the duty of the other group member or the outsider who will tell you that this may or may not be acceptable. Examples क्या है? Counting to 10. I believe you have seen this many times in English movies or in Hollywood movies. If someone is they are they have anger issues, they are quelling, they are screaming, right? And they are fighting. So one of the mediator they come and they explain and they tell this they count to 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, right? That's how they do it, right? So counting to 10, reverse counting, it helps. Or calling a timeout. You must have seen the timeout. If the people they are people they are conflicting, they are angry over an issue, then definitely one of the person he comes and he said time out. Okay, time out. What does it mean? These are the ways कि जिससे आप क्या कर सकते हैं सिचुएशन को de-escalate करने में हेल्प कर सकते हैं. Expressing concerns in a written, carefully edited letter or email are simply but effective recommendation for controlling conflicts. So these are the ways that how you can avoid some anger issues and you can compose the environment, right? Apologies too are effective means of reducing anger. So apologies obviously it may help कि अगर आपको लगता है you have done something, you have said something which is unwarranted, then you can apologize to the affected party, then definitely that's how you can also reduce it. Group can also control anger by developing norms that explicitly or implicitly prohibit show of strong negative emotion or by holding meetings on controversial topic online. Okay? Group can also control anger by developing norms that okay. So what is explicit or implicit? क्या prohibited? किस तरह की चीजें physical हो जाना physical is something like एक दूसरे से मार पिटाई कर देना that can be very explicit. That is not acceptable in any organization. Implicit something saying something negative or comment something personal comment, making some personal comments, right? Or it can be abusing someone, which can be very explicit also, right? So these are the things which may help definitely to the participant कि अगर participant को पता हो कि क्या exhibit explicitly or implicitly acceptable है नहीं है definitely वो help करेगा to uh, to normalize the situation, right? So I hope this anger to compose part is also clear. I understand it's been 3 hours. लगातार 3 hours बोल पाना is also a very big problem which I am facing. But I believe आप लोगों को समझ आ रहा होगा, clear हो रहा है, Yes, sir. right? अच्छा, shall we take 15 minutes break? That is the last chapter which I want to discuss with you. Okay. 15 minutes के break के बाद we will resume our class at 2:15, right? 2:15 पर क्लास को शुरू करेंगे and which is the last chapter which I mean the last chapter which is left is group influence, how influence work in a group setting. We will talk about it, right? Okay.
Hello, am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yeah, shall we start now? अभी start करते हैं. I'm going to share my screen, and this one will be the last discussion of this class, and we will talk about the chapter number 5. It is chapter number 5, which is called influence, right? तो influence chapter के ऊपर हमने discussion, this was the discussion we did in an offline class. We talked about what is called group influence and how group influence work. So in order to make you understand about the influence, we had seen one of the trailer or some of the movie clip of the movie name was 12 Angry Men, right? We had seen the trailer from that movie 12 Angry Man, and we got the idea how influence work. So what is called influence and how group members they influence each other? What are the different types of influence and how influence work, and what are the different theories based on influence process? So when the majority of the group members champions a particular view, they may pressure the few dissenting group members to change for the sake of group unity. So basically, when we talk about the influence, so normally when it comes as influence, we normally consider influence as called majority influence, right? Majority influence is something when the member or most member most number of member they influence minor. For example, if there's a group of 16 individual and 12 they have particular view and 4 has different view or the dissenting view, 12 member, obviously naturally the 12 member they will try to influence 4 minor members which are lesser in number. That's how influence works. So on the basis of such discussion, we can say there can be the two type of influences. One is called majority influences, which I just explained you with the help of this example. And there is another one which is called the minority influence. Minority influence can be reversed, wherein the 4 members, these 4 minor number, they may try to influence these 12 members. We will call it minority influence, right? So majority influence is a social pressure exerted by the larger portion of a group. As I told you, 12 members, they are influencing the other 4 members. Whereas when we talk about the minority influence, यहाँ पर कम लोग, एक ग्रुप में जो कम लोग होंगे या एक इंडिविजुअल होगा, वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे. Obviously, minority influence is actually very difficult, क्योंकि कम लोग ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए ये रेयर है, एंड एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू अचीव. वेयर इज जब हम बात करते हैं मेजोरिटी इन्फ्लुएंस की, इट इज कॉमन, इट इज क्वाइट कॉमन, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इन्फ्लुएंस वर्क. What is the main systematic approach when we talk about influence? Each one strives to change a group to suit his personal inclination. We always want, for example, if there are 4 or 5 members in a group, everyone may have their different opinion, and every single one of us we want that our opinion should be reflected in a group. यानी हम में से हर कोई चाहेगा कि हमारे ही ओपिनियंस, हमारे ही आइडियाज को ग्रुप के बाकी लोग भी उसको माने और वो ग्रुप का आइडिया बने. एंड एट द सेम टाइम एवरी सिंगल वन ऑफ देम दे वुड थिंक इन अ सिमिलर वे. बट क्या ऐसा होता है? दैट इज द मेन क्वेश्चन. कई बार होता है कि आपको दूसरे के आइडियाज को, दूसरों के लॉजिक्स को मानना पड़ता है, और आपके ओपिनियंस को भी बाकी लोग कई बार कंफर्म करते हैं या उनको अग्री करते हैं. तो देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स. यहाँ पे सवाल उठता है कि आप यानी एक इंडिविजुअल मेंबर क्या ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस. एंड एट द सेम टाइम ग्रुप ही इंडिविजुअल मेंबर को अफेक्ट करता है, राइट? तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं. इट स्वेज देयर जजमेंट,
favored one interpretation of reality over another and encourage certain behavior while discourage other. तो जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो नॉर्मली इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना कि ग्रुप के मेंबर किसी इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करेंगे, कई बार इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को इम्पैक्ट करेगा, राइट? नाउ members they modify their judgments so that they match those of other in their group. So sometimes it is understandable कि कोई ओपिनियन है, किसी चीज पर इशू है, आपका किसी पॉइंट पर एक अलग ओपिनियन है, right? And the others, these two others, they may have different opinion on something. तो हो सकता है slowly and gradually you can also match their opinion. आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैंने एनालाइज किया एंड मैं मानता हूँ कि जो आपका ओपिनियन है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू माइन. दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल, राइट? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कन्फर्मिटी. इस फिनोमिना को कन्फर्मिटी कहते हैं. वी कॉल इट कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी इज समथिंग व्हेन वी चेंज आवर ओपिनियन, ठीक है, इन द लाइन ऑफ अदर मेंबर्स, राइट? Which is a change in opinion, judgment or actions to match the opinion, judgment or action of other group member or the group's normative standards. तो अगर आप ग्रुप के बाकी मेंबर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, then we will call it conformity. इसको बच्चे हम conformity कहते हैं, ठीक है? Now, in order to understand conformity in a clearer way, we need to understand arch solution. So as solution is something which is a very important situation. He had given this theory as situation, and he tried to make it theory evident with the help of an empirical study. So Solomon Asch was the one. He started with this conformity theory. As situation is an experimental procedure developed by Solomon Asch in his studies of conformity to group opinion. यानी कि Solomon Asch he wanted to know कि अगर ग्रुप के लोगों का ओपिनियन कुछ होता है, चाहे वो कितना भी गलत ओपिनियन हो, कितना भी सही ओपिनियन हो, क्या वो बाकी ग्रुप मेंबर्स को अफेक्ट करता है? क्या बाकी मेंबर्स भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और कंफर्मिटी शो करते हैं? कई बार होता है कि आप अग्री नहीं करते बट आपके ग्रुप के बाकी लोग एग्री करते हैं, तो आप भी मजबूरन या इन्फ्लुएंस में या रियल चेंज ऑफ ओपिनियन की वजह से यू कंफर्म देयर ओपिनियन. So that he wanted, this Solomon Asch, he wanted to know this with the help of a study, and he did that study. And in his study, the participant believed that they were making perceptual judgment as part of the group, but the other members were confederate who made deliberate errors on certain trials. So what actually happened in his trial? I just want to give you this clear indication about this trial. I had explained this entire as situation in the PPT. You may refer your PPT as well. So what he did, he drew certain lines, right? He drew certain lines. So he drew this line, he drew this line, and he drew this line, right? And he asked the participant which line is the shorter and which line is the larger one. Which line जो सबसे बड़ी है, A, B or C, right? If you look at prima facie, then definitely B line is a clear winner, which means the B is the larger one. सबसे बड़ी line है. लेकिन हुआ क्या? There were number of participants, and some of the participants, they were confederates. Confederates means those who are not the part of the study, but they are the actors, right? They were those who wanted to influence the real participant. हुआ क्या? The actors, they started giving the wrong answer again and again. Most of them, 90% of them, they believe that C line is a larger one, which is not true. If you look at the prima facie, B line is the larger one, but because they were the actor, they wanted to influence the real participant, they started saying the C line is the largest line, right? हुआ क्या इससे? इस चीज से क्या हुआ? जो रियल पार्टिसिपेंट थे, ओवर द टाइम, ओवर द ट्रायल, जो 50 से प्लस ट्रायल हुए सेम सिचुएशन में, ओवर द ट्रायल, real participant in many cases, they also confirmed, yes, C is the right answer. Initially they gave their answer B as the right answer,
but because of the conformity, because they were seeing the other participant, क्योंकि उनको idea नहीं था, they had no idea that the other are, they are the actors and they are giving false answer in order to influence them. But over the time, the real participant, they started, they also started giving the wrong answer. तो यहाँ से एक चीज समझ आई कि ग्रुप के लोग किस तरह से आपके रियल ओपिनियन को अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कंफर्मिटी हो सकती है. इट मींस जो एज सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, द एज सॉल्यूशन, sorry, as situation that demonstrate what, how majority group, how majority affects minority, right? अगर मेजॉरिटी के कुछ आंसर ऐसे होंगे जो गलत हैं, प्राइमा फेसी आपको पता लग रहा है बी इज अ लार्जर लाइन, नो डाउट अबाउट इट, बट बार बार अगर ट्रायल को किया जाएगा तो हो सकता है द माइनॉरिटी विच आर द रियल पार्टिसिपेंट, दे विल स्टार्ट thinking over again and again, and they might give the wrong answer as a C is the right answer, right? So they may say, so many confirmed when placed in as situation showing a marked movement toward the majority, right? तो minority के लोग जो majority आंसर कर रही थी उसकी तरफ जाने लगे और उन्होंने C को एक right आंसर की तरह दिखाया जो कि eventually reality में गलत आंसर था. As discovered that people confirmed on about 1/3 of the trial, यानी जितने भी ट्रायल हुए उसमें 1/3 में लोगों ने गलत आंसर को कंफर्म किया टुवर्ड जो मेजॉरिटी आंसर कर रहे थे, जो एक्टर लोग आंसर कर रहे थे. सम पार्टिसिपेंट नेवर कंफर्म्ड, कुछ ने अपने आंसर को बिल्कुल चेंज नहीं किया, बट दे वर वेरी लेस इन नंबर, जिन्होंने अपने बी राइट आंसर को अडॉप्ट किया हमेशा और सही कहा, बट मोस्ट डिड सो एटलीस्ट वन, बट ज्यादातर ने उस आंसर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सी कैन बी द राइट आंसर. यानी ज्यादातर केसेस में कंफर्मिटी इस सिचुएशन में देखने को मिली. सो even in the class I also shared this result of this as solution which he had made. Now look at this numbers. How many member made at least one error? So more than 75%, which is a third fourth of the total member, they made at least one error. It means at least one time they confirmed majority, they confirmed toward majority. यानी ठीक पता होते हुए भी उन्होंने गलत आंसर किया क्योंकि मेजॉरिटी बार बार वही गलत आंसर को ठीक बता रही थी, राइट? हाउ मेनी टाइम डिड द एवरेज मेंबर कंफर्म? एवरेज टाइम कंफर्म was 36.8% was the time. How many group member never confirmed? What does it mean? It means 24% लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी कंफर्मिटी नहीं की, यानी वो ग्रुप के बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हुए. बट इफ यू लुक एट कि 100 में से 24 लोग नहीं हुए बट 76% जो जानते हुए भी कि ठीक आंसर बी था, बट बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस वो इन्फ्लुएंस हो गए, विच इज अ वेरी बिग नंबर, 76%. How many group confirmed 10 times or more? 11%. How many individual made at least one error when tested alone? यानी जब उनको लेकिन अलग में टेस्ट कराया गया, यानी कि आप देखिए ये जो टेस्ट था वो ऑडियंस के साथ था, इट मींस इन पार्टिसिपेंट था, बट द सेम टेस्ट व्हेन इट वाज डन अलोन, यानी आपसे अकेले में यही क्वेश्चन किया गया कि विच लाइन इज द लार्जर लाइन, तो उसमें गलत आंसर कम आए, राइट? ओनली इन 5% केसेस. लेकिन जब यही चीज की गई ग्रुप में तो 76, एटलीस्ट 76% केसेस में गलत आंसर आए, एटलीस्ट एक बार एरर हुआ. तो इट डेमोन्स्ट्रेट कि ग्रुप का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मेजॉरिटी ग्रुप आपको, मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल माइनॉरिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस डेटा डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, जहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. बात समझ आ रही है सबको? अच्छे से क्लियर हो रहा है? प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर. बताइए बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now we will see his conclusions. So even the Solomon, as when he also expected the participant would resist. कितने परसेंट ने रेजिस्ट किया? ओनली 24% ने रेजिस्ट किया, यानी उन्होंने कहा कि नहीं ये जो आंसर है
C is not the right answer. B, which actually is the right answer, they also resisted. But the number was very less, only 24%. What about 76%? यानी 76% ने influence हो गए, right? So he was also surprised with such conclusion someday. But each time the group made its judgment, many of the participants sided with the incorrect majority. जितनी ज़्यादा trials हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग shift हुए किसकी तरफ? गलत आंसर की तरफ, right? Now, this study confirms important things which are the large majority are more influenced. As I told you, the Solomon as solution is it talks about majority influence. ये minority influence की बात नहीं करता, ये majority influence की बात करता है. ये आपको ध्यान आना चाहिए, right? But only up to a point. But इसका मतलब है there is a limit. After that limit or beyond that limit, this majority influence will not work after certain point. People in two-person group confirmed very little. यानी छोटे ग्रुप्स में क्या हुआ, कंफर्मिटी काफी कम थी. अगर दो ही लोग हैं तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होना काफी कम होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि दो ही लोग हैं. आपके सामने तो एक ही है ना. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो अगर वो कोई गलत आंसर कर रहा है तो आप उतने इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कंपेयर टू अगर कोई बड़े ग्रुप में ज्यादा लोग गलत आंसर कर रहे हैं, राइट? Most were unsettled by the erroneous choice of their partner, but they did not go along with him or her. 3%, 3.6% was the error rate in two-person group. Two-person group mein error rate was only 3.6%. Now look at this. Error rate has increased to 14% जब ग्रुप था बड़ा, जिसमें दो से ज्यादा मेंबर्स थे, ठीक है. बट इन केस in a group of three, more than three, the conformity increases to 31.8%. इसका मतलब है जैसे जैसे ग्रुप में लोग ज्यादा होते जाएंगे, मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. Majority influence get higher and more stronger as the member increases, but up to a certain level. And the level was what? In a member, okay, with more than three member, it was 37.8%. Sorry, in a 7% group member, even 16 against 1 did not raise conformity appreciably above the level achieved with these with 3 against 1, right? यानी conformity increase हो रही है as a group size increases, group number of people are increasing, but up to a level. After a level, the group conformity is not increasing at an increasing rate. ये मतलब है, ठीक है? Now, come to this. The question is, what are the different type of responses? जब आप किसी ग्रुप का मेंबर होते हैं तो आपके रिस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं? What can be the different type of responses can be expect from a group setting? There are three, which are compliance, conversion, and congruences. One by one. Compliance is something what? जिसमें क्या करते हैं, आपने मान लीजिए ग्रुप के 16 लोग एक बात कह रहे हैं, they are saying same thing. एक सेकंड. There are 16 of a group, they are saying same thing. आपको पता है वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, you are the one, 16:1, and you said, but आप इन्फ्लुएंस हुए और आपने भी उसको यस कर दिया. पर प्राइवेटली आपसे पूछा गया कि आपका सच में ओपिनियन ये था, you said no. मैंने तो ग्रुप के प्रेशर में आके कह दिया, क्योंकि ग्रुप में ज्यादा लार्जर नंबर और मोर नंबर ऑफ पीपल दे वर कंफर्मिंग इट. दैट इज द रीजन आई कंफर्म टुवर्ड देम, यानी मैंने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन प्राइवेटली आपने मना कर दिया. दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस. इस तरह के सोशल रिस्पॉन्स को वी कॉल कंप्लायंस. कि ग्रुप, बिकॉज ऑफ द ग्रुप प्रेशर, यू सेड समथिंग, बट इन प्राइवेट you said something else. So privately you disagree with the group, but you publicly accepted the majority, right? Now the conversion is private acceptance. What does it mean? Their agreement indicates a true change of opinion. They personally accept the influencer position as their own. Now conversion is most realistic or most desirable. इस 16 लोग अगेन एक बात कह रहे थे. Now you also said same thing. Okay, ठीक है.
बट क्यों? इसलिए नहीं कि आप प्रेशर में आए, नो, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर, बट यू सेड यस बिकॉज इन रियलिटी योर ओपिनियन वाज चेंज, इन रियलिटी योर ओपिनियन चेंज्ड। सही में आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ओपिनियन गलत था, अब मैंने ओपिनियन चेंज कर दिया है। It is not because of pressure. It is because that you have changed your idea, you have changed your mind on that particular aspect. That is called conversion. आपका conversion हो चुका है, right? Now, last one which is called congruences. Congruences is something what? Congruences में आप क्या करते हैं? ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, ग्रुप से एग्री करते हैं, जो मेजोरिटी इन्फ्लुएंस है उससे एग्री करते हैं, बट आपके अपने रीजंस होते हैं। आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ग्रुप के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो, आप इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी रीजनिंग कहती है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज द कॉन्ग्रुएंस। तो तीन तरह के रिस्पॉन्सेज हुए। कंप्लायंस, जो प्रेशर में आकर आपने एक्सेप्ट किया बट प्राइवेट में मना कर दिया। कन्वर्जन, आपके ओपिनियन सच में चेंज हुए। कॉन्ग्रुएंस, आपने ग्रुप को अग्री किया बट बेस्ड ऑन योर रीजनिंग, यानी आप ग्रुप में किसी प्रेशर की वजह से चेंज नहीं हुए, अपने रीजनिंग की वजह से चेंज हुए। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सोशल रिस्पॉन्स। ठीक है। नाउ non-conformity. Non-conformity can involve at least two different processes. Now, जिस तरह से conformity है, in the same way we have non-conformity. इसके भी दो तरह के responses हैं. There are two type of responses of non-conformity, one by one. First, people who refuse to bend to the will of the majority may be displaying independence, the public expression of idea, belief, and judgment that are consistent with their own standard. भले ही 16 लोग उस चीज पर हाँ कर रहे हैं बट आप मना कर रहे हैं, आपको लग रहा है गलत है तो गलत है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन या जो मेरे बिलीव्स हैं, मेरी जो जजमेंट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। मैं इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला अगर 16 लोग गलत भी कह रहे हैं, बट मेरा ओपिनियन नो ही रहेगा। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट नॉन कन्फर्मिटी। इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। वाई बचे इट इज इंडिपेंडेंट? क्योंकि आपका जो डिसएग्री होना है वो पूरी तरह से अपने बिलीव्स के बेसिस पर होना है। आप इसलिए डिसएग्री नहीं हो रहे क्योंकि वो यस कह रहे तो मुझे नो कहना है, नो, दैट इज एंटी कन्फॉर्मिटी। उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसलिए कर रहे हैं नो क्योंकि आपके बिलीव कहते हैं कि नो करना चाहिए। ठीक है, एंड यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू। सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन कन्फॉर्मिटी, the expression of idea or the taking of action that are opposite of whatever the group recommends. अगर ग्रुप कहेगा कि दिन हो रहा है तो आप रात कहेंगे, मतलब नहीं होता कि रात है या नहीं है। ग्रुप रात कहेगा तो आप दिन कहेंगे, यानी आप हमेशा ग्रुप के ऑपोजिट ही अपनी बात रख रहे हैं, राइट, भले ही ग्रुप कुछ भी कहे। तो इस तरह का जो कंफर्मिटी है, नॉन कंफर्मिटी, वी कॉल इट एंटी कंफर्मिटी. In some cases, anti-conformity is motivated by rebelliousness, obstinacy, rather than by the need of the accurately express oneself. What does it mean? कि कई बार आप रिबेलियस हो जाते हैं, रिबेलियस हो रहे हैं तो आप बायस हो गए कि ग्रुप अगर दिन को दिन कह रहा है, भले आपको पता है कि दिन हो रहा है लेकिन आप रात कहेंगे उसे। दैट इज कॉल्ड कि आप ग्रुप के अगेंस्ट चल रहे हैं अपनी बायसनेस की वजह से। दैट इज कॉल्ड एंटी कन्फॉर्मिटी। ठीक है। लास्ट वन इज कॉल्ड द डेविल्स एडवोकेट. डेविल्स एडवोकेट इज समथिंग, आपको पता है कि आप गलत कह रहे हैं, आप ग्रुप के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इफ ग्रुप इज सेइंग यस, ठीक है, यू ऑल्सो नो आंसर इज यस, आपको पता है आंसर यस है, बट यू आर सेइंग नो. व्हाई? बिकॉज यू वांट योर ग्रुप टू लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. आप भी यस ही करने वाले हैं, बट आपको पता है कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है कि अगर ये नो आंसर होगा तो क्या होगा. तो व्हाट यू वांट योर ग्रुप टू इंट्रोस्पेक्ट और टू लुक द सेकंड साइड, टू लुक द अदर साइड, द अदर साइड. दैट्स कॉल्ड द डेविल्स एडवोकेट. डेविल्स एडवोकेट का मतलब आप जानबूझकर रेजिस्ट कर रहे हैं बिकॉज यू वांट योर ग्रुप टू लुक एट द अदर साइड, दूसरा पर्सपेक्टिव भी ग्रुप देखे. दैट इज द रीजन. ठीक है, तो आई बिलीव ये समझ आया होगा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस.
right? Different type of responses, I believe clear है. Now the last one is called the minority influence. अब हम इसकी बात करेंगे. Minority influence क्या होता है? We will talk about the minority influence. Now, minority influence is something, as the name itself suggests, wherein the less number, they influence large number. और majority, अगर कम लोग ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर दें, which is rare and difficult, which is rare and difficult. बहुत मुश्किल होगा ना कि 10 लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर पाए, चेंज कर पाए, इम्पैक्ट कर पाए. That is called the minority influence. So, as solution talk about majority influence, now we'll talk about minority influence. Right? We will talk about this minority influence through a theory which is called conversion theory. हम conversion theory पढ़ेंगे जो minority influence के बारे में बात करता है. ठीक है? तो majority does not always overwhelm the dissenter. But for some time, it is the minority that is the influencer and the majority that is influenced. यानी कुछ रेयर केसेस में माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कर सकती है मेजॉरिटी को. कब हो सकता है? सो Sergei Moskvitsky and his colleagues underscores the power of minority. They were the one they described the importance of minority influence. As ने बताया majority का, इन्होंने बताया minority influence का importance. Conversion theory. He basically gave this theory which is called conversion theory. It suggests that minority influence in a different way than majority. यानी माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस अलग तरह से काम करता है, मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस अलग तरह से काम करता है. मॉस्कोवी थियरीराइज इन्फ्लुएंस थ्रू अ वैलिडेशन प्रोसेस. एक वैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. ठीक है, वैलिडेशन प्रोसेस. एंड दिस वैलिडेशन प्रोसेस इज एक्सप्लेन किस तरह से होता है. It explored how consistent and confident minority can influence the majority. What does it mean? Consistency. ऐसा नहीं है कि आप एक बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, अगली बार करें ही ना. तो उसके लिए क्या चाहिए? The minority to influence majority, then they should need a consistency and confidence, right? Leading to change in opinion and behavior. Obviously, you need these two things, consistency and confidence. Unlike majority influence, which often result in a superficial compliances. देखो मेजोरिटी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेजोरिटी में आप साइकोलॉजिकल बर्डन, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हैं कि 100 लोग क्या आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आपसे अलग ओपिनियन रख रहे हैं, तो मेजोरिटी हो गए वो, तो आप उनकी बात को वैसे ही हाँ कर देते हो, राइट? इन्फ्लुएंस होकर कंफर्मिटी कर देते हो. लेकिन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपके नंबर कम है, अब आपको अकेले को 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस, राइट? दीज टू, राइट? नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस थियरी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी. Consistency is the minority must be consistent in their view over time. जैसे मैंने बताया consistency आपको रखनी पड़ेगी. Consistent minority are more likely to be taken seriously and provoke cognitive conflict in the majority, leading them to reconsider their own viewpoint. I believe you have seen movie. मैंने last time movie आपको recommend की थी, which is 12 Angry Men. This is the classic case of minority influence. There was only one person who said the accused is not guilty, and rest 11, they were of the same opinion the person is guilty. But over the time, he made valid points, right? He made valid remark also, and with consistency, he was confident, he was consistent, and he continuously made valid points throughout that conversation. And over the time, from 11, there was some comparison. Okay, why he is saying so? He can be correct. एक डाउट क्रिएट कर दिया ना 11 लोगों में, बाकी में, ठीक है. And over the time, 1 member, 2 member, 3 member, 4 member, eventually all 11, they sided him,
तो यानी माइनॉरिटी ने अकेले ने 11 लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लिया. So what does it take? It mainly takes consistency and confidence. The minority must display confidence in their stance. Confidence can lead the majority to believe that the minority's view has merit. Obviously, there should be a merit. आप एडमेंट नहीं हो, एडमेंट होना अलग चीज है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप एडमेंट नहीं हो बट आपके जो पॉइंट्स है उसमें मेरिट है, prompting them to think more deeply about the issue. That is the only reason the rest 11, they started comparing. अपने व्यूज को कंपेयर करने लगे कि क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं, राइट. Flexibility and avoid dogmatism. Something which is consistency is important. The minority must also show some degree of flexibility and willingness to adapt, right? That is also important. They must have some flexibility. A rigid, dogmatic approach can be off-putting and reduce the influence of the minority. मैंने वही कहा आपसे कि रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, बट हाँ आप फर्म होने चाहिए. दोनों में फर्क है. फर्म होने का मतलब है कि आप जो चेंजेस हैं, जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, उन्हें तो करेंगे. इट मीन्स यू आर फर्म एंड फ्लेक्सिबल, बट आप अननेसेसरली प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दैट इज कॉल्ड फर्मनेस. ठीक है. साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म. माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस often works through a process of internalization, where members of the majority start to genuinely adopt the minority viewpoint after a period of reflection and private acceptance. So first, majority में वो privately accept करते हैं, but majority में सबके सामने accept करने से उनको दिक्कत होती है. But over the time, they started accepting it genuinely. So that's how this convergent theory given by Sergei Moscovitch, he was the one who explained this minority influence. If you really want to understand with the help of this example or this movie which I recommended, you can see this movie. You may see it after your exams, but it's a wonderful movie that mainly demonstrate how influence work from minority to majority, right? So he also had taken this movie as one of the base example to demonstrate how minority influence is important and how it is different from majority influence. So exam में ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस की प्रोसेस में क्या डिफरेंस है. प्रोसेस में क्या दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट. माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. इट इज इजी, मच easier, right. It needs validation. It doesn't need any validation. It's a long process. Minority is a long process. Obviously, it's a time consuming. आपको अकेले को 11 लोगों को कन्विंस करना है, यहाँ पर 11 को अकेले को आपको कन्विंस करना है. So it's a short process, small process, you can say, right? These things. ठीक है. So I hope this influence part is also clear, everyone. Clear है? Yes sir. Yes sir. Okay. ठीक है. तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन यहीं तक रहेगा. एंड प्रेरणा, आप क्लास में हैं? हाँ. तो आपके पास नोट्स हैं सारे, बिकॉज यू वर द वन हु हैड टेकन द अर्लियर क्लास, राइट? सर मेरे पास सिर्फ 3 पीडीएफ है आपकी. पीडीएफ और पीपीटी, सॉरी पीपीटीज है. बाकी आपने शेयर करनी थी, आपने की नहीं. I think I have shared all PPTs with one of the student. I don't remember her name or his name. I don't remember whom I shared, but there were all the PPT which I shared from my side. And Asha, do you want this PDF file to be shared with you? The PDF which we are working on it. सर इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मतलब सारी पीपीटीज द्वारा शेयर कर सकते हैं, बिकॉज जिसको भी आपने शेयर की थी उसने शेयर नहीं की है हमसे. Okay, so I will share, definitely I'll share all the PPTs and this PDF also. That will help you out when you will prepare for examinations. And there is one or two things which are left from my side, which are the notes.
As I told you, one of the part which is there is sources of conflicts, right? So this one I had I had dictated some of the notes on in the offline class, but there was just one or two students who were present in the last class, one of the class, not last class. So I would want you to get those notes. So I will provide those notes and all the PPTs and PDF with you. Okay, by evening, not evening, by 7 or 8 p.m. today. ठीक है. तो प्रेरणा, आप अगर हैं तो आप प्लीज बाकी स्टूडेंट्स को वो शेयर कर देना. ठीक है. सर जो ऑफलाइन नोट्स थे, ऑफलाइन नोट्स हैं आपके पास? सर मेरे पास कंफर्मिटी की नोट्स हैं, मेरे पास क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की नोट्स हैं, लेकिन जो आपने रामनवमी वाले दिन क्लास ली है, मैं अनफॉर्चुनेटली उस दिन नहीं आई थी, तो मेरे पास उस दिन की नोट्स नहीं है. ठीक है, तो आई विल शेयर दोज नोट्स. ठीक है. ओके सर. सर बट आप शेयर कहाँ करेंगे? नो, किसको शेयर करूँ? आपको कोई ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप? सर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मतलब या तो मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं वहाँ डाल देती हूँ, या आप डायरेक्ट वहाँ पे शेयर कर दीजिए. हाँ ठीक है, यू कैन कांटेक्ट मी एंड देन आई विल शेयर. ठीक है. सर फॉर दैट आई नीड योर नंबर, या मेरा स्क्रीन पे विजिबल है? सॉरी सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है. ओके, so just take my number and please message me. I'll share these PDF and all the notes, और जो sources of conflicts है वो भी मैं आपको शाम तक शेयर कर दूँगा. ठीक है. ओके सर. हाँ, it's 8802. सर वेट, 8802 168824 16. 8824. हाँ ओके. ओके, थैंक यू सर. तो आई बिलीव युवराज, अभिषेक, प्रेरणा, देवांशी एंड सुनिधि सबको समझ आया है जितना भी हमने डिस्कशन किया है? क्लियर है? So please coordinate with Prerna in case if you're not a part of the group. Please get those notes and PPTs, and especially this PDF is very important. And start preparing for your exams. Acha, what is the date of your examinations? Have you got the date sheet? सर अभी कोई कंफर्म डेट शीट नहीं आई है, एक टेंटेटिव डेट शीट है हमारे पास. Okay. जिसमें मिड ऑफ जून में है एग्जाम. अच्छा, मिड ऑफ, मतलब हम मई से शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट डेट शीट, लेकिन हमारा जो इंटरपर्सनल एंड ग्रुप प्रोसेस का पेपर है वो मिड ऑफ जून में. ठीक है, but I would request every one of you please prepare hard for this exam. This paper is actually very important, but unfortunately most of the students, they were not present in the offline classes as well. So you start preparation from this time onward, and I believe some of the concept must be very clear. And I understand 4 hour class, 4 hour long class is actually not a very viable option, but at the same time we tried our best to give the idea in a more precisable way. And I will share this PDF also, जो भी इसमें notes मैंने लिखे हैं. If you want कि मैं notes को maintain रखूं PDF में, as let me just show you. और मैं इनको हटा दूं. इनको अगर आप हटाने को बोलेंगे, I will definitely remove them. और if you want them कि ये सब जो मैंने यहाँ पे mention किया है, इनको मेंशन ही रहने दे, हटाए ना प्लीज. ठीक है, no problem. I will keep them. ठीक है, thank you so much you all. I'll share the notes. Thank you. थैंक यू सर. Thank you, sir.